I have only one rule is like as long as it's funny, there's no strict rules like मैं मुझे clean comedian होना चाहिए, curse words नहीं वो use करना चाहिए. And it's a very personal thought कि like the curse word shouldn't be the center of the joke. My shows, like some of my best audience, or mothers in their 40s and 50s. Because when they come out to watch a live stand-up, it's once in a lifetime opportunity for them. And when they come out, they don't care about any, like 50 people in the audience will be silent, they will laugh. And because अभी तक इंडिया का कॉमेडी क्या होता है, तो like heartland of इंडिया, चार स्टेट, वहाँ से 20 to 25 सिंगल मैन को क्या पसंद आते हैं, तो वो कॉमेडी है अभी तक. I know like comedians who are in like 35, 30s plus still trying to talk about college, Bumble, dating apps जैसे बात कर सकते हैं, क्योंकि like वो सेल कर सकते हैं, वो वायरल हो जाते हैं. Like they don't want to take that unknown territories to find out like what more audience can I get. I feel like majority of right wing, at least in India, वो लोग बोलते हैं ना, like there are higher frequency vibrations of joy, peace, happiness, और lower frequency of fear, hatred, anger, वो सब होता है. It's very naturally the right wing pulls you down to the lower energy vibrations. The whole idea of a religion is to keep people at an individual level at these kinds of higher vibration emotions of happiness, peace, prosperity, love and all that. And if you're using the same religion in the name of right wing to bring them down to a lower energy vibration, then what's the point of it? Abhi tak ho raha hai na, like there's a huge debate on south ka tax north ko aayega, उनका डेवलपमेंट है, उनका रेवेन्यू है, पर बिहार और यूपी को जा सकते हैं. लाइक एंड माय क्वेश्चन इज लाइक डजंट मैटर, इट्स ओके, वी आर इन इंडिया व्हाटएवर. क्यों अब तक बिहार के लोग कोयम्बतूर आते और कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर का काम करते हैं? If you are actually spending the tax money on these states, where is the development there? Where is the employment there? राज ठाकरे आज दिस क्वेश्चन बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने नेताओं से ये पूछना चाहिए कि आपने हमारी ऐसी दुर्गति क्यों करी है कि हमें कहीं और जाकर के जलील होके, बेइज्जत होके काम करना पड़ता है सिर्फ जिंदा रहने के लिए. वहां पर जाकर के वो अंबानी नहीं बन जा रहे हैं, अडानी नहीं बन जा रहे हैं. 200 रुपए 300 रुपए लोग काम करते हैं. मिनियल जॉब्स, उतना सिर्फ जिंदा रहने के लिए जहां पर वो पैसा कमा रहे हैं, उतना भी पैसा वो अपने जहां वो पैदा हुए, जहां उनका घर है, वहां नहीं, अपने स्टेट में नहीं कमा पा रहे हैं. तो ये अटर फेल्योर है हमारी पॉलिटिशियंस का, जो नॉर्थ इंडिया के बीमारू स्टेट्स हम कहते हैं. तो ये बीमारू स्टेट्स के लोगों को अपने नेताओं से ही सवाल करना चाहिए, बजाय इसके टेलिंग पीपल फ्रॉम ऑफ बैंगलोर, पुणे एंड मुंबई, प्लीज टॉलरेट अस, प्लीज accommodate us in your system, in your society, because our leaders are failing us. And the trend is not changing, that's the worst part. नॉर्थ के बारे में साउथ के लोग किस तरह सोचते हैं? There's an assumption, or I think it's reality, वो सब loud है. ज़्यादा loud है. I was traveling through Uttarakhand. I was on a trek recently, right? And I actually started feeling the saddest for two states in the country, Uttarakhand और हिमाचल. वो पहाड़ी लोग like इतना chill है और इतना peace, but day in day out they have to meet people from Harrier car, Tar car, हरियाणा से आते हैं, यूपी से आते हैं, और सब loud है. Just like the feeling of aggression all the time. Like every time I go to Uttarakhand, or Himachal, the cab drivers get agitated. They react very differently to a guy coming from South Chennai से. Like they are more respectful and more calmer with us compared to when they see a guy from Delhi coming and sitting in their cab. If you observe that properly, you will understand क्या गलत है. Like whenever I meet anyone from Northeast India, we start bonding immediately by shitting about Delhi people. This is an actual incident that happened in a comedy club in Bangalore. और उस टाइम पे एक Sri Lankan Canadian Tamil guy was sitting in the audience और होस्ट को पूछता है आप कहाँ से है. वो बोला like मैं Sri Lankan Canadian हो पर Tamilian है. And not kidding, there is a guy on the left on something who in Bangalore, in a comedy club in Bangalore, shouted, "Hey, oh, Madrasi," and hated without reason. Exactly. So, but like that's what, right? In that comedy club or whatever that space, these guys start feeling like we are in Delhi. I have worked with corporate employees who can speak English, still denied to speak in English. They speak in Hindi in a team setting, in a team meeting, a professional official meeting. Why? As long as like they have the majority, they will do it. When there was some agitation against Hindi billboards and Hindi signs in Bangalore, all of North India, particularly the Hindi-speaking people, were so agitated that how can they deny Hindi language, Hindi
Hindi alphabets or Hindi script, etc. The Delhi dwellers feel that they are the entitled one, they are the one who should, they are the privileged one, their privileges are justified, and rest of India is there to serve them. You know the funny part, in one of the elections in some South Indian state, BJP imported Yogi Adityanath over there to tell them that if you choose BJP, we will make Kerala as good as UP. Actually, he was saying this. You show them confidence, you can sell anything to them. You show that confidence, like mujhe pata, listen to me. The moment you do that, right, you have that charisma, confidence. Doesn't matter what comes out of your mouth, people buy it. I agree. Being confident on stage and saying anything wrong, any lie or anything. Since last 11 years, India is suffering that. I can imagine. हेलो दर्शकों, हम लोग 1-1.5 साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और अब 80 से ज़्यादा एपिसोड हम कर चुके हैं। अगर आपको अभी तक हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि ये आगे बढ़ता रहे और आराम से फ्रीली काम करते रहें हम, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक हाइप बटन आया है, आप उसको भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो हाइप हो जाएगा, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और हम अपना काम कर सकेंगे, आप तक पहुँचते रहेंगे। थैंक यू। तो किंतु परंतु पे आपका स्वागत है नवीन। स्वागत, नमस्कार। आप जिस मौसम में आए हैं वो दिल्ली के लिए वैसे मौसम तो अच्छा है, लेकिन बहुत पोल्यूशन है। आपको महसूस हुआ क्या? पता है मुझे अभी आज तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे पता है वो वर्स्ट है वो बेटर है। आई एक्सपेक्टेड दिस सो। और बेंगलोर में कैसा AQI रहता है? बेंगलोर में अभी तो थोड़ा अच्छा है, बट बेंगलोर में भी पोल्यूशन होता है, वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, वो AQI थोड़ा अच्छा है क्योंकि वो ट्रीज भी थोड़ा ज़्यादा है और पता नहीं वो ग्रीन कवर है। हाँ, ग्रीन कवर थोड़ा अच्छा है और लेक्स भी ज़्यादा है। इसलिए लिटिल पोल्यूशन उनको यू कैन फील इट, बट आई थिंक नंबर वाइज आई थिंक इट्स अ लिटिल लोअर दैन दिल्ली और NCR रीजन के। जब भी कोई बाहर से आता है तो अब दिल्ली वाले 2 चीज़ों के बारे में ज़रूर बात कर रहे होते हैं, या बात अपने आप निकल आती है। एक तो पोल्यूशन, दूसरा ट्रैफिक। तो हम दोनों जिस शहर से आते हैं ना, वहाँ ये दोनों कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। होता है बैंगलोर और दिल्ली, वो सिमिलर होता है इसके चीज़ में। लाइक पॉल्यूशन है भी वहाँ पे भी, ट्रैफिक बहुत बड़ा है बैंगलोर। आई थिंक बैंगलोर टॉप्स ऑन दैट कंपेयर टू दिल्ली, व्हाटएवर आई हैव सीन इन दिल्ली, लाइक व्हेनेवर आई हैव विजिटेड। आई थिंक होता है वो शहर में होता है, इंडिया में शहर में लाइक पॉपुलेशन है, कार्स भी बड़ा होता है। लाइक अभी तक लास्ट 5-6 years आई थिंक लाइक द नंबर ऑफ कार्स रनिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑन द रोड्स ऑफ बैंगलोर, दिल्ली, लाइक एवरीवन। और सबको SUV चाहिए अभी किसी को थोड़ा छोटा वाला कार नहीं चाहिए, सबको चाहिए वो हैरियर वाला। हाँ, स्टैटिस्टिक्स भी यही बता रहे हैं, जो स्मॉल कार सेगमेंट है वो कम हुआ है, या वहाँ पर बहुत सारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ हैं या अबव मिड सेगमेंट वाली है, जो क्रॉस ब्रीडिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा। और अभी थार आ गई है ना, तो उस तरह की गाड़ियाँ बहुत पॉपुलर हो गई हैं। मेरा कॉन्स्पिरेसी है कि लाइक लोगों को मर्द बनना चाहिए उसका अपॉर्चुनिटी कम होता है, फिर काम में IT का काम करते हैं जैसा लाइक मर्द नहीं जैसा फील नहीं लगता, इसलिए लाइक बड़ा गाड़ी खरीदे को मस्त बनाया। I think that's the main, it's a psychological reason. I don't think people need to get such big cars or whatever, but like उनको लगाता है लोग तार है तो मैं मत दे। आपने बहुत ज़रूरी बात कह दी। ये इसका साइको एनालिसिस होना ही चाहिए कि ज़्यादातर मर्द अब बैठ के टेबल पर काम कर रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रीन से काम कर रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है नहीं, जो मसल पावर है वो है नहीं, वो दिखता नहीं है। तो उनको जिम जाना है और उनको बड़ी गाड़ी मस्कुलर कार्स खरीदनी है, जिससे कि वो मर्द जैसा फील करते रहे। मेरा सवाल है कि लाइक तार गेट अ कार, गो ऑफ रोड, हिमालय चले गो, वेस्टर्न घाट्स चले भी, लाइक ओल्ड दिल्ली से न्यू दिल्ली जाने के लिए क्यों तार चाहिए और आई डोंट नो पीपल्स माइंडसेट। हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छा डायमेंशन आपने मुझे दिया है कि मर्दों को मर्द जैसा फील करते रहने के लिए मस्कुलर कार्स चाहिए। You will never see, I have never seen a women drive a
SUV, in most cases, I feel. When women get a car, it's for utility, like from point A to point B. Like, but I think men and loans भी ज़्यादा आएगा. Like 20 years back, there was no loans for cars or whatever. Now, like सबको car है, 10 साल loan बेचते हैं, like every month 35,000. So it doesn't matter whether they are getting a loan for like 8 lakhs या 15 lakhs. उनको लगता है like हर महीने पैसा हो सकता है, like जा सकता है. So I think like there is no financial barrier also to buy a big car अभी. Right, so I think like that. दर्शकों, आज के मेहमान हमारे एक स्टैंड अप कॉमिक हैं, आर्टिस्ट हैं और पॉडकास्टर भी हैं. राइट. तो हम लोग कॉमेडी के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन बात सीरियस होती जा रही है, तो लेट्स कम बैक टू योर वर्क. पढ़ाई क्या किया आपने? मैंने पढ़ाई MSc थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस नाम पे एक कोर्स है कोयम्बतूर में, PhD टेक कॉलेज से पढ़ाया. 5 साल वहाँ रखते थे और पैदा हुआ, born and brought up in Chennai, studied in Coimbatore for 5 years, and last 10-12 years ever since college I've been in Bangalore. IT जॉब के लिए आया बैंगलोर और फिर 2 साल में लाइक कॉमेडी शुरू कर दिया और अभी तक कंटिन्यू हो गया. तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग किस साइड से हैं आप? थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस मतलब वो मैथ प्लस कंप्यूटर साइंस जैसा कोर्स है. लाइक ज़्यादा मैथ्स भी है और कंप्यूटर साइंस भी है. ये रिसर्च ऑन कंप्यूटर साइंस के लिए बनाया गया एक ही जैसा कोर्स है इंडिया में. अच्छा. वो बड़ा वाला कॉलेज है PSG साउथ में. ज़्यादा लोग सॉर्ट आफ्टर होगा. Yes, but it's a very limited course. Now अभी तो they have like crypto and crypto science के एक कोर्स है और data science के एक कोर्स है. वो अच्छा वाला है, वो niche कोर्स है. क्रिप्टो साइंस का भी कोर्स होता है? या क्रिप्टोग्राफी का कोर्स है. या और ये जैसा होता है कि लाइक ड्यूअल डिग्री कहते हैं लोग, लाइक MSc प्लस BSc 5 साल का कोर्स वो पढ़ाया मैंने. बहुत लोग जो कंप्यूटर्स में जा रहे हैं, IT में जा रहे हैं, वो कॉमेडी में आ रहे हैं. तो स्क्रीन के सामने बैठ के या जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें क्या पैरेलल कोई थॉट चलता रहता है जो आप ये कर रहे हैं? तो कैसे होता है ये होता है लाइक आई फील लाइक वन रीज़न होता है कि लाइक ये सब लोग लाइक दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर में रहते थे. लाइक द एक्सेस टू कॉमेडी इज़ देयर. नहीं होता है वो झारखंड में रांची पे लोग कॉमेडी नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका अपॉर्चुनिटी मौका नहीं मिलेगा. या तो लाइक यहाँ सिटीज़ में लाइक सब लोगों को आउटलेट चाहिए. स्ट्रेसफुल कॉर्पोरेट में जॉब होते तो लाइक सबको लगा रहे, लाइक 80% ऑफ द लोग को लगा रहा है वो ये बोरिंग है. ऐसा भी लाइक एंड लाइक लास्ट 10-15 years देयर इज़ अ एंटायर शिफ्ट. लाइक सॉफ्टवेयर में भी जॉब हो सकता है, लाइक वेदर यू स्टडी सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर, वो सबको सॉफ्टवेयर में काम मिलेगा. एंड उनको लाइक द मोमेंट दे जॉइन द जॉब दे फील लाइक वो मेरा लाइफ ख़त्म हो गया. इसमें काम करता है, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, पैशन भी नहीं है, सिर्फ का पैसा के लिए, वो ऑन साइट का अपॉर्चुनिटी के लिए मैं काम करता हूँ. उस टाइम पे लोगों को लगता है कि मुझे एक आउटलेट चाहिए. एंड डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट थिंग्स आउट के लिए. कई लोग लाइक दारू से चलते different things, right? Like music cases, but comedy like अभी इंडिया में like last 10 years it's been booming, growing so suddenly that like so that इसलिए like current outlet है कि like comedy एक अच्छा outlet हो जाएगा उन लोगों के लिए. तो आपने ये कहा कि जॉब में आने के बाद ये एहसास हो जाता है कि लाइफ इज़ ओवर और ये तो बहुत बोरिंग काम है. आई मीन जिस काम को करने के लिए, जॉब पाने के लिए कई साल की पढ़ाई करते हैं लोग, उसके बाद जॉब में आने के बाद ये वाली फीलिंग सेट इन करती है. बिकॉज अभी काम ईजी हो जाएगा अभी इस सोसाइटी पे आई मीन लाइक नॉट फॉर एवरीवन. ऐसा लोग का बात कर रहे थे तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैंगलोर, चेन्नई और दिल्ली, ऐसा गुड़गांव में होता है को लाइक 21 पे पढ़ाई कर दिया. लाइक आई थिंक योर जनरेशन दे हैड टू लाइक डू बंच ऑफ अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप्स. 28-30 में होता है लाइक वो परमानेंट जॉब मिलेगा, अभी अच्छा सैलरी मिलेगा. उस साइड टाइम पे लोगों के शुरू होता है लाइक कैरियर. अभी लाइक 22 में लाइक लोग को 2 lakhs का सैलरी मिल गया. लाइक अच्छा वाला AC कैफेटेरिया, AC रूम सब मिलेगा. देन पीपल लुक फॉर द लाइक लोग बोलते हैं ना लाइक पहले खाना कपड़ा मकान और थोड़ा स्टेबिलिटी वो होता है. तो लाइक लोग लोग का दिमाग लाइक
goes crazy, you know, they were like, oh, We what have next? arrived. अभी क्या है, you know, और कुछ चाहिए लाइफ में. मुझे भी हो चुका है, like मुझे कंप्यूटर साइंस पसंद है, इसलिए मैं कंप्यूटर साइंस का कोर्स किया, और अमेजोन में फर्स्ट जॉब है मेरा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, और आई वॉज हैप्पी फॉर लाइक 3.5 years. उस टाइम पे लाइक वो यू नो ज़्यादा सैलरी आएगा, यू नो, अमेजोन में सबसे बड़ा काम अच्छा है और लोग अच्छा है, वो स्ट्रेसफुल है थोड़ा बट अब अच्छा है. बट विद इन लाइक 3-4 years आई वॉज लाइक वो अभी क्या है, यू नो, अभी लाइक यू नो आई डोंट हैव टू वर्क हार्ड फॉर मोर सैलरी, अभी भी ज़्यादा है मेरे के लिए. लाइक उस टाइम पे लाइक यू नो आ गया लाइक वो अच्छा है, अभी लाइफ में क्या है कोई, यू नो, लाइफ में कुछ और क्या है. बिकॉज लाइक आई थिंक लाइक इफ पीपल बाय द टाइम दे गेट टू दैट लेवल व्हेन दे गेट मैरिड, वो बच्चा होते हैं तो लाइक लाइफ यू नो सेटल हो जाएगा, और लाइक उस लाइफ में जाएगा. बट व्हेन यू गेट लाइक टू दैट लेवल ऑफ लाइक फीलिंग लाइक व्हाट नेक्स्ट इन लाइफ इन योर 20 to 25, देन ऐसा यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर लाइक ओ मुझे पॉडकास्ट शुरू करना, मुझे कॉमेडी करना, मुझे यू नो एक बैले डांसर बनना, यू नो, ऐसा हो सकता है. वो ज़्यादा लोग हो सकता है अभी जनरेशन के लिए. तो इट इज़ जस्ट बिकॉज यू नीड न्यू किक्स इन लाइफ, सो इस वजह से लोग जाते हैं उसमें, जबकि बहुत सक्सेसफुल और वेल अर्निंग करियर्स को छोड़ करके आ रहे हैं. सब लोग छोड़ नहीं सकते, वो शुरू होते हैं लाइक साइड में पैशन के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, और समथिंग इफ अट्रैक्ट्स यू सो मच देन यू लाइक टेक द लीप, यू नो, दैट्स व्हाट हैपेंड टू मी. तो आप जॉब में हैं अभी? मैं अभी लाइक फुल टाइम जॉब पे नहीं है, मैं करता हूँ स्टैंड अप में मेन से, और मैं ट्रेनिंग भी कर सकता हूँ, लाइक सॉफ्टवेयर लोग के लिए मैं ट्रेन कर सकता हूँ, अपस्किलिंग के लिए, बहुत टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स के लिए मैं ट्रेन कर सकता हूँ. मैं कंसल्टेंट हूँ, वो भी अभी तक लाइक सॉफ्टवेयर के टच पे है. आप टच में हैं? टच में है. तो क्योंकि आपकी फील्ड बहुत जल्दी बदलती है या अपग्रेडेशंस आ जाते हैं, नई चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको टच में रहना पड़ेगा, अदरवाइज वो भी हो सकता है. और आई मीन लाइक पैसा भी आ सकते हैं एक कंसल्टेंट रोल में, कॉर्पोरेट में भी पैसा है. लाइक इतने साल कॉमेडी करता है, लाइक वो कंपैरिजन भी नहीं है कॉमेडी का पैसा या यू नो कॉर्पोरेट का पैसा, वो भी है. और मुझे लास्ट 4-5 years आई लर्न लाइक आई लाइक टीचिंग. आई लोग के मेंटरिंग करने के लिए, टीचिंग करने के लिए मुझे पसंद आया. एंड इट्स काइंड ऑफ इम्प्रूव्स माई कॉमेडी स्किल्स ऑल्सो, बिकॉज इट्स स्टिल अगेन लाइक इंटरेक्टिंग विद पीपल, मेकिंग एनीथिंग एंटरटेनिंग, राइट, यू नो, सो इट गोज हैंड इन हैंड. सो मुझे अच्छा लगता है. इट कॉम्प्लीमेंट्स बोथ थिंग्स. कॉम्प्लीमेंट्स बोथ वेज. या तो कितने साल से कॉमेडी कर रहे हैं? अभी तो होगा लाइक 10 साल. 2015 में शुरू कर दिया मैंने. वाओ. It is comfortable for a decent life. For me, at least, like my kind of lifestyle is वो आते हैं नो, वो भी लाइक वो सब फ्रीलांस करियर और आर्टिस्ट करियर में होता है. लाइक 1 साल बड़ा होता है, 1 साल 1 महीने लाइक छोटा वाला कोई भी नहीं आता है, लाइक वो जैसा आता है. बट माई काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल, आई हैव सम सेविंग्स अराउंड, लाइक इफ आई इवन डोंट डू एनी कॉर्पोरेट वर्क आई कैन स्टिल बी हैप्पी विथ लाइक वॉट एवर. यू नो, आई रन अ फ्यू स्मॉल बिजनेसेस, वो भी होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट होते हैं. मुझे चेन्नई में एक कॉमेडी क्लब भी चलाते हैं. सो उससे भी लाइक आई हैव लाइक सोर्सेज ऑफ इनकम फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस, सो विच कीप्स मी हैप्पी. एंड वॉट एवर आई गेट फ्रॉम कॉर्पोरेट डूइंग दिस ट्रेनिंग्स एंड ऑल इज लाइक वो सेविंग्स पे चले गए, लाइक यू नो फ्यूचर के लिए चले गए. सो इट्स लाइक वेरी फाइन. यू नो, इसमें भी लाइक एक जोक भी मैं चलाते हैं, लाइक एक साल होते हैं, लाइक ऑडिटर मुझे टैक्स रिफंड भर गया, और मैंने बोला लाइक ओ वी नीड मोर कंटेंट क्रिएटर्स लाइक यू, वी नीड मोर आर्टिस्ट लाइक यू. क्रिएटर्स का इकोनॉमी है. लाइक द नेक्स्ट ईयर द सेम गाय वाज लाइक वो क्या है, 28 रुपीज़ चाहिए आपको गवर्नमेंट के लिए रिफंड. ऐसा भी हो सकता है. सो इट्स लाइक अप्स एंड डाउन्स, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर इट. राइट. कुछ दिन पहले मेरी किसी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, और उन्होंने कहा ओनली स्टैंड अप कॉमेडियंस कैन सेव अस, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल थिंग्स. और उन्होंने कहा कि नथिंग मैटर्स टू दिस पॉलिटिशियंस एनी मोर, वी कैन ओनली शेम दैम, एंड शेमिंग कैन बी डन थ्रू कॉमेडी. स्टैंड अप कॉमेडियंस आर एट बेस्ट. तो स्टैंड अप कॉमेडीज के से बहुत उम्मीदें पैदा हो गई हैं, बहुत लोग बहुत उम्मीदें लगाते हैं. आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी? इट इज़ द बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट रिडन सोसाइटी दैट वी आर लिविंग इन एवरीवेयर, इन आवर फैमिलीज, इन आवर सोशल लाइफ, इन आवर कम्युनिटी, इन आवर यू नो द सिटी दैट वी आर लिविंग इन. इतना कन्फ्लिक्ट रिडन एग्जिस्टेंस है हमारा कि ओनली कॉमेडी कैन गिव अस सम रिस्पाइट. पहले कि लाइक आई डोंट अग्री टू बोथ ऑफ इट, इन द सेंस लाइक वो अग्री कर दिया मैंने.
कॉमेडियंस हो बच्चा वाले है, उनको पीपल इन पावर को डरना मत आते, लाइक वी कांट scare the people in power with like whatever we say. It's like a little bit of hustle and bustle for them, but they don't get scared of even like people का power like a अलग level से है, like इसलिए like until it comes to that level of fame or whatever, they don't even care. Like मैं वो छोटा वाला comedian है बैंगलोर से, I can say anything, people won't care, especially if I say in English, because it's not like they care about me, it's not like they see me as a threat. वो नहीं हो सकता है. इसलिए like what you said is also true, like इसलिए like comedy politicians को नहीं जाना चाहिए, वो लोगों को जाना चाहिए. लोगों को क्यों जाना चाहिए? चेंज करने के लिए नहीं. वो मुझे लगता है like you can't change anyone with just a guy on a mic telling jokes. That doesn't make sense. मुझे लगता है like what I want to do or what I try to do is like वो मेरा जैसा होना चाहिए. लोगों को they have to start thinking for themselves. रैशनल थिंकिंग बनना चाहिए. इसलिए लोगों के सही जवाब हम पूछना चाहिए. जब सही जवाब सही लाइन के थिंकिंग के तरफ लाइक हम पॉइंट करना चाहिए. और लाइक थिंकिंग और नॉट थिंकिंग इज लाइक वो द ऑडियंसेस विश. वो हो सकते हैं तो अच्छा है. कॉमेडियंस का जॉब हो ये है, वो भी लाइक एक्स्ट्रा है. लाइक पहले काम लाइक लोगों को खुश होना चाहिए, laugh करना चाहिए, और like just have to be funny. That's the first point. And on top of it, if you can make at the end of the show, if you can make people think a little bit about what you said for themselves, and the solution और like conclusion उनके तरफ है. like अलग अलग लोगों को अलग अलग conclusion मिलता है, अलग अलग understanding मिलता है, वो उनका है. but सोचना पड़ेगा because like we said, like we not a generation of thinking for ourselves. peer pressure ज़्यादा है. कभी कभी लोगों को क्या करता है वो हम भी करता है. लोग हारियर खरीदते रहते हैं, हम खरीदते हैं. वो 3 BHK अपार्टमेंट गुड़गांव पे खरीदते थे, हमको भी लोन चाहिए, खरीद देते हैं. सो लाइक in a generation like this, like if you can point people to a little bit of rational thinking and thinking for themselves, some introspection, some awareness, some consciousness, that is my goal probably. Yeah. And even the basic act of making somebody think of their own actions, that whatever you are doing, you don't want others to do it to you and you are doing it to others. Or maybe some environmental issues or issues related with society, particularly the problems we are facing, the caste and the region and the language and all those things. So we can always point out. Exactly. That, and like वो मेरा लाइफ पे मुझे सीखा था कि like you can blindly go do everything. अभी like पैसा है तो लग्जरी है, you can get everything, you can want everything, but every action में थोड़ा सा कॉन्शियसनेस माइंडफुलनेस होता है तो अच्छा लगता है. आपको भी अच्छा लगता है, लाइक सोसाइटी को भी अच्छा लगता है. दैट लिटिल बिट ऑफ माइंडफुलनेस इज व्हाट एट द मैक्स आई थिंक a comedian can point to. Exactly. And particularly when we talk about civic sense, etc., then mindfulness is something that is really lacking and that we need in our society to come by. And there are many other fault lines like misogyny and patriarchy and all those things that can be taken care of through stand-up comedy, because whenever we are seeing these issues, they are mostly located in our personal lives, in our family life, in our social life, in our communities. So this is the way, because otherwise you cannot go and tell your father, or you can go and tell your neighbor, please don't do this, please don't speak these words, etc. So I understand, I agree. So when I saw you for the first time, it was this whiteboard, and you were talking about the majority and who is majority and how majority converts into a minority, and how minorities and majorities are created within the social group. I thought that this is something very, very intelligent. I mean, it is only for the elites who understand, who can read, number one, and who would understand the basic terminology of minority, majority, and all those terms. Are you very conscious of staying within a group, esoteric group? ऐसा नहीं है. I think like the concept I try to explain, I think is still the simplest version of it. वो इंग्लिश में हो रहे तो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि लाइक मुझे हिंदी अच्छा नहीं आता है. लाइक इफ आई डू इट इन हिंदी इट वोंट बी. आई थिंक इफ अ रियली गुड हिंदी स्पीकिंग पर्सन कैन ट्रांसलेट द एग्जैक्ट सेम थिंग, उनको टर्मिनोलॉजीज नहीं चाहिए, मेजॉरिटी माइनॉरिटी टर्मिनोलॉजीज चाहिए. वो क्या लाइक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो स्ट्रक्चर का अंडरस्टैंडिंग चाहिए. वो पीपल कैन अंडरस्टैंड. उनके लिए लाइक एजुकेशन नहीं चाहिए,
कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ा सेंसिबिलिटी होना चाहिए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी होना चाहिए. और वो होते हैं लाइक सब सेक्शन के लिए. There are like really rich people or like upper class people in urban India who cannot comprehend what I said. और लोगों पे होता है लाइक गांव में एक यूपी का एक गांव में इंग्लिश भी नहीं आते है, वो सिर्फ लाइक स्ट्रक्चर लाइक डायग्राम देखने के लिए उनको लगता है मैं क्या बोला, उस ऐसा लोग मैं मैसेज भी कर दिया इंस्टाग्राम पे. लाइक ऐसा नहीं है, वो एजुकेशन का प्रॉब्लम नहीं है. मुझे लगता है कि लाइक इट्स नॉट अ कॉन्शियस चॉइस ऑफ बीइंग नीश और नॉट नीश. आई थिंक this is my way of interpretation, this is my way of communication, and this is a conscious choice that I'm choosing the language of English. मुझे दो ही चॉइस है, मुझे इंग्लिश में करना या तमिल में करना. वो मेरा मदर टंग है, हिंदी में नहीं कर सकते ये. मैं हिंदी इज़ नॉट गुड और मुझे नहीं चाहिए, वो ज़्यादा डेंजर भी है उसमें इसलिए मुझे उसने नहीं चाहिए. और लाइक लॉट ऑफ पीपल कॉमेंटेड ऑल्सो, वाई आर यू डूइंग इट इन इंग्लिश, वाई हिंदी में नहीं करना, हिंदी में क्यों नहीं कर दिया. I'm like, it's a choice. I know I have to stick to my character, my persona, what are my strengths also. ऐसा नहीं है तो like I don't want to reach the masses. If the same thing reaches more people, good. But I can do it only in the circle of my expertise. और मेरा क्या आता है वो आता है. Right. इसलिए तो आप यहाँ दिल्ली में और नॉर्थ इंडिया में कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं अभी तक? मैं दिल्ली आएगा लाइक दिल्ली गुड़गांव में लाइक 3 बार परफॉर्म कर दिया. इस टाइम मेरा पूरा सोलो शो परफॉर्म कर दिया. और चंडीगढ़ में एक बार गया और देहरादून में एक बार गया और क्या है, नॉर्थ इंडिया में ऐसा होता है. एक बार नॉर्थ ईस्ट भी गया मैं. आई हैव परफॉर्म्ड इन शिलोंग, गुवाहाटी. सरप्राइजिंगली आई हैव परफॉर्म्ड इन इम्फाल वंस. होता है लाइक probably the first and last comedy show there. Very sad. But it was very good show, surprisingly. Because ज़्यादा लोग वहाँ नहीं जाते. ये 2021 के बारे में मैं language barrier is not there. It is there. I mean, like in the sense, like they understand Hindi also, but a lot of people I know, really famous comedians, haven't dared to go to Imphal. This is even before the riots and the problems that has been happening there. Because like I don't know, it's just people assume like हमारा लोग नहीं है, उनको नहीं पसंद, उनको नहीं समझाते हम के बारे में. Only Guwahati also, like only last 2-3 years people have started going. उनको लगता है उनको like they understand us or whatever. But when I went to Imphal, it was just a leap of faith. मुझे भी नहीं पता कैसा लोग आएगा, कौन सा लोग आएगा. I just wanted to, one thing I was comfortable with is like लोग आएंगे तो उनको English समझाते तो I can give them a good time. So only that trust I had, I went and we had a great show. We had about 80-100 people, 2 shows we did. मैं और एक कमेडियन के साथ गया था, आनंद रत्नम नाम से. अच्छा टाइम आ जाएगा. एंड लाइक स्पेशली शिलोंग, नॉर्थ ईस्ट का लोग, नॉर्थ ईस्ट का प्रोड्यूसर्स, वो आर्टिस्ट को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं. लाइक उनका फैसिलिटीज़ भी लाइक दे सी यू एज एन आर्टिस्ट. एंड लाइक पीपल दे सी सॉरी टू से दिस बट लाइक दिल्ली में बॉम्बे में लाइक इवन बड़ा आर्टिस्ट को लगता है लाइक ए मनी मिंटिंग मशीन. लाइक प्रोड्यूसर्स वो देख सकते हैं कॉमिक्स के और एनी आर्टिस्ट के. लाइक वहाँ जैसा नहीं, देयर इज अ वेरी आर्टिस्टिक लव फॉर any kind of art in Northeast that I loved. How lovely. And we haven't heard much about them because हमें लगता है कि जो पूरा इकोसिस्टम है बुकिंग और शो ऑर्गेनाइज करने का, वो लोग कॉन्सेंट्रेटेड है इन द हार्टलैंड ऑफ पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एटसेट्रा. सो एंड देन इट मूव्स ऑन टू महाराष्ट्र, बॉम्बे, पुणे, राइट. तो ये है. लेकिन नॉर्थ ईस्ट में लोग सुन रहे हैं इस कॉमेडी को. दैट मीन्स इट इज़ रियली अ मेन स्ट्रीम कॉमेडी दैट यू आर डूइंग, बिकॉज द होल ऑफ इंडिया इज लिसनिंग टू यू एंड वांट्स. तो इट इज़ काइंड ऑफ अ मेन स्ट्रीम thing that, but not massy, as you said. You like I said, that's a beef I always have, right? लोग को लगता है कि वो दिल्ली का कमेडियन 4 स्टेट लाइक यू सेड, हरियाणा, उस पे लाइक 1000 सीटर का बेचते, उनको कहते हैं इंडिया का बेस्ट, इंडिया का बड़ा कमेडियन. Yes. There are people like me, not just me. There are people like me who have performed across the country, like Imphal जैसा, शिलोंग जैसे, सब शहर्स जैसे, लाइक कोयम्बतूर में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, और हमको कहते हैं लाइक साउथ इंडियन का एक कमेडियन. Seriously? Yeah, it's the thing. और लोग बोलते हैं वो इंग्लिश कमेडियन, वो इंडिया का कमेडियन नहीं. और आप कितनी क्यूट हिंदी बोल रहे हैं इतनी देर से, मैं सुन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा, आई हैव टू टेल दैट स्टोरी टू देम आल्सो. वो शिबा मैम ने लाइक रिक्वेस्ट कर दिया, आप
ये शो पूरा हिंदी में करना, एंड आई टुक द चैलेंज, क्योंकि लाइक वो यू नो इफ पीपल अंडरस्टैंड क्या क्या बोलते हैं वो तो अच्छा होते हैं, लाइक वो लाइक यू सेड मासेस को रीच कर सकते हैं, लाइक नॉर्थ इंडियन लोग, सो ज़्यादा लोग को रीच कर सकते हैं। मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, मेरा इंसाइट क्या है, लाइक यू नो गाय फ्रॉम बैंगलोर, फ्रॉम चेन्नई, उनको इंडिया को क्या सोचा, क्या लगता नहीं, ये तो लोग को यू नो फनी होते तो यू नो समझ नहीं आते, तो ये लेसन है कि क्यों साउथ इंडियन का लोग को हिंदी इम्पोज नहीं करना। यस सो बोथ साइड्स इट्स अ गुड थिंग आई गेस। और नवीन, इतनी देर में जितनी हिंदी आपने बोली है ना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे नॉर्थ इंडियन से कहें जो 10 साल से साउथ में रह रहा है, चेन्नई में या बेंगलोर में रह रहा है, और आप उसको बोलें कि इतनी तुम तमिल बोलो या कन्नड़ बोलो, तो वो नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है, और थैंक यू फॉर द अटेम्प्ट, और थैंक यू फॉर सेइंग दिस ऑल्सो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ इंडिया के लोगों को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती है कि इट इज़ वेरी ओके इफ़ समबडी इज़ अनेबल टू स्पीक इन हिंदी हु डजंट बिलोंग टू यूपी, दिल्ली, बिहार एंड मध्य प्रदेश। ये बात उनको समझ ही नहीं आती है। उनको ये लगता है कि सारी दुनिया को हिंदी ही बोलनी चाहिए, कम से कम विद इन द कार्टोग्राफिक बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री वन शुड बी स्पीकिंग इन हिंदी इज ओनली। इवन फॉर मी राइट, वो फ्री विल से आना पड़ेगा जी। मुझे मैं हिंदी नहीं सीखा क्योंकि लाइक वो गवर्नमेंट बोल रही है, यू नो, और लोग बोल रहे हैं वो यू नो अच्छा होते हैं। आई डोंट नीड हिंदी इन माई लाइफ, honestly speaking. Yes. The places I go perform, the corporate life I have, you know, the cities I go mostly, the audience I get, whatever, I don't need English per se. One of the major reasons I learned English, like एक भी होता है like तमिलनाडु में, You mean हिंदी? Yeah? हिंदी सॉरी, तमिलनाडु में होता है like सिलेबस में आता है स्कूल में, वो थर्ड लैंग्वेज जैसा आता है। उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ेगा, उस टाइम पे स्पोकन हिंदी कोई भी नहीं, बिकॉज यू जस्ट लर्न लाइक नंबर्स सिखाता है, वर्ड सिखाता है, कबीर का दोहा से सिखाता है, ऐसा होता है। मेरा ज़्यादा बात करने के यू नो हिंदी सिखाता है कब मैंने कॉमेडी शुरू कर दिया। कॉमेडी उस टाइम पे भी लाइक ऐसा नहीं को लाइक आई हैव टू लर्न हिंदी। I liked a lot of Hindi comedians who are funny, or like you know I wanted to understand them. So इसलिए like मैं ज़्यादा हिंदी कॉमेडी देखता है, like ऐसा बन सकता है like spoken हिंदी का ऐसा। I don't know if it's good enough, but yeah. नहीं, you are communicating well, and Yeah. that is what is important. Exactly, है ना? thank तो ये तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है आपका। तो नॉर्थ इंडिया, अब जब मैं नॉर्थ इंडिया कह रही हूँ, तो आपके लिए जो नॉर्थ इंडिया का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत वाइड है। इट इज़ नॉट जस्ट द हार्टलैंड अराउंड दिल्ली, इट इज़ ऑल्सो द नॉर्थ ईस्ट, है ना? तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑडियंस ऑफ दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, चंडीगढ़ एंड नॉर्थ ईस्ट or any other part of the country? I think I'm a wrong person to ask this question, because यहाँ आते के बाद लाइक मुझे नहीं परफॉर्म कर दिया पूरा जाट लोग, और लाइक यू नो ऐसा नो मेन स्ट्रीम लोग नहीं आ सकते मेरा शो के लेके। कल भी को एक शो कर दिया दिल्ली में, वो मेरा ऑडियंस आते हैं, लाइक आई सेड, लाइक इट डजंट मैटर वेदर यू आर लाइक अपर क्लास, लोअर क्लास, और व्हाटएवर। आई फील लाइक whoever is coming to my show at this point, or people with you know certain level of sensibilities, और लोगों को होता है कि you know they don't take themselves seriously। वो बहुत ज़रूरी है मेरे शो आने के लिए, लाइक डोंट बी टू अपटाइट, वो मत दे नो ऐसा वाला लोग नहीं आते। आइडेंटिटी स्ट्रिक्टनेस, या सो लाइक यू नो पूरा गुस्सा वाला लोग वो नहीं आते, लाइक सो आई एम सेफ दैट वे, लाइक बिकॉज लाइक आई हैव फाउंड पीपल अक्रॉस द कंट्री विद दैट सेंसिबिलिटी देयर एवरीवेयर। यू नो दिल्ली में भी होता है, हरियाणा में भी होता है, लाइक यू नो इम्फाल में भी होता है, लाइक वैसा लोग मेरा शो के आते हैं, लाइक कभी कभी आते हैं लोग लाइक दे डोंट नो व्हाट शो इट इज, एंड और आ सकते हैं लाइक मैं बोल देते लाइक इट्स नॉट लाइक आउटराइट यू नो हेट और समथिंग, बट आई नो दे आर नॉट एंजॉइंग द शो। मुझे लगता है लाइक उनको मैं नहीं चाहिए, उनको चाहिए और दूसरा वाला दिल्ली का कमेडियन। सो ये होता है लाइक, but like I said, right, like there are like as much as India is diverse in terms of languages, culture, whatever, there is a certain level of sensibility and like you know rational thinking prevailing in all regions. वो डिफरेंस होता है, लाइक कभी कभी स्टेट में लाइक ज़्यादा लोग रैशनल थिंकिंग कर सकते हैं, लाइक सेंसिबिलिटी डिफरेंट है और अंडरस्टैंडिंग सकते हैं, माइंडफुलनेस भी है। और कभी कभी स्टेट में लाइक कल्चर है कि लाइक उनको लाइक पीयर प्रेशर के जाने वाले हैं, और लाइक वो यू नो एड्रेनालिन से टेस्टोस्टेरोन के आते हैं, वो आई डोंट नो, इट्स लाइक अ कल्चरल थिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट। बट आई थिंक पीपल आर इवॉल्विंग नाउ, लाइक नाउ इंटरनेट भी आ जाते हैं,
लोगों के पता है कि लाइक क्या होने वाले और सब इंफॉर्मेशन सब नॉलेज सब इंटरनेट में है. सो लोग को देख सकते हैं. जियो भी है, इंटरनेट लाइक पूरा इंडिया में है. आई थिंक लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज आई फील लाइक इन द लास्ट 10-15-20 years कंपेयर टू 25 years वेयर लाइक वो गांव में है को उसमें क्या होते हैं वो वर्ल्ड है. ऐसा नहीं है अभी. लाइक people are getting smarter and more intelligent day by day, exposed day by day. So like True. I'm seeing, in spite of all this diversity, I'm seeing like-minded people across the country, which is a good thing. Yeah. And have you noticed something that in North India the comedy also is very liberated in terms of language is concerned. I mean, I don't know if I'm using the right expression, but the curse words are pretty in Northeast, no, in North India. So what is it like in हमें नहीं पता कि तमिल में या कन्नड़ में क्या बोला जा रहा है. तो लैंग्वेज के साथ कितनी लिबर्टी ली जा रही है. आर यू अडेप्ट टू यूजिंग कर्स वर्ड्स और स्लैंग्स दैट आर नॉट कंसिडर्ड डिसेंट और समथिंग. मैंने like एक I have only one rule is like as long as it's funny. Okay, there's no strict rules like मुझे clean comedian होना चाहिए, curse words नहीं वो use करना चाहिए. And it's a very personal thought कि like the curse word shouldn't be the center of the joke. Right. Joke, it can escalate a joke if it like feels natural, if it feels ऐसा भी हो सकता है. like दिल्ली का comedians पे like कभी-कभी देख सकते हैं like उनका natural language होते हैं. Like even as a South Indian, I can understand like it's authentic. That's how this guy speaks. But कभी-कभी होता है like out of nowhere like a forced curse word MCBC आता है. like I can understand because मुझे comedy का rhythm पता है और क्या authentic क्या नहीं है मुझे पता है. So that as long as that is maintained, I think it's हो सकते हैं. like तमिल में भी हो सकते हैं, कन्नड़ा में भी. और लोग like एक इंडिया में भी नहीं लाइक अमेरिका भी होते हैं लाइक क्लीन कॉमेडियंस का फैंस है. कभी लोग बोल सकते हैं लाइक कॉमेडी डर्टी नहीं होना चाहिए, वो कर्स वर्ड नहीं होना चाहिए, वो कंट्रोल भी करना चाहिए. वो डिविजन पूरा दुनिया में भी है और इंडिया में भी है. लाइक इफ यू डोंट वांट दैट ऑडियंस, you can do whatever you want. And there are some people who consciously do clean comedy not because they are clean people or something. It's just like उनका एक niche audience है, उनको cover करना होता है. और मुझे याद है कि शुरुआती दिनों में, आज से कुछ साल पहले, मैं टीवी पर मैं यूट्यूब पर जब स्टैंड अप एक्ट्स देखती थी तो उसमें बेवजह unnecessarily they would put in certain curse words और people were kind of shocked कि ये बोला जा सकता है पब्लिक में. For the shock value they were quite popular. They were shocking people with this new language that they were using publicly because हम तो बड़े हुए ना उसको सुन के कि नहीं ये सब बातें नहीं बोलनी है, इसको सुनना भी नहीं है. तो वो शॉक वैल्यू जो थी उससे भी बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्शन मिल रहा था. लेकिन अभी तो सब कुछ इतना कॉमन हो गया है कि नाउ पीपल आर क्वाइट कॉन्शियस कि योर गुड कॉमेडी डजंट नीड दिस प्रॉप्स. ये भी आ गया है अभी. और the other side of the coin is also true. Just because someone is clean doesn't mean good comedy. Yeah, that's okay. Yeah. वो भी like ज़्यादा घटिया कॉमेडियन से सिर्फ क्लीन करने के लिए बदत फेमस हो सकते हैं. Exactly. Yeah, both ways. सो नवीन, आपने खूब अच्छे से ट्राई कर लिया है. अभी आगे की बातचीत में जैसा भी आप कंफर्टेबल हो अंग्रेजी में एक्सप्रेस करें या हिंदी में एक्सप्रेस करें. आई एम एंजॉयिंग दिस. अभी तक मैं सर्वाइव कर दिया. तो अभी आपने ऑलमोस्ट हाफ एन आवर आपने अपनी प्यारी हिंदी में बातें की हैं. नाउ यू आर फ्री कि आप जैसा चाहें बात करें. ठीक है. हर कॉमेडियन के लिए एक कुछ ना कुछ उसके मन में फॉल्ट लाइंस होती हैं कि हम इस तरफ नहीं जाएंगे, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे. ये अपने आप आ जाता है या आप जो पॉलिटिकल सिचुएशन है आपके आसपास उससे तय करते हैं? मेरा ऐसा लिमिटेशंस कोई नहीं है. लाइक टॉपिक्स के बारे में लिमिटेशन कोई नहीं है. बट देयर इज़ लाइक अ लिमिटेशन ऑफ अ कंट्री यू लिव इन. कल्चर ऐसा है, वो डेंजर ऐसा है, वो आई एम माइंडफुल ऑफ दैट. इसलिए लाइक आई थिंक लाइक it's not so much about the topics or whatever. First thing is like if you are really funny saying anything, I think you can get away a little bit. Or second thing, I am very conscious of a little bit of subversion, nuance, होना पड़ेगा इंडिया में especially. डायरेक्ट नाम नहीं ले लो, डायरेक्ट
references भी नहीं ले लो, but like the same point you can get across with a little bit of polishing, little bit of like not telling it directly, but like और like लोग को समझ आते हैं तो समझ आते हैं, नहीं तो नहीं, that is the risk you take, but like that level of nuance and subversion is a skill set that comes along with good stand-up comedy, I feel. And as long as you're aware about that, I think you can still get the same point across without the risk of whatever. And some people don't like that subversion. उनको होना चाहिए तो directly बोलना पड़ेगा, वो भी choice है, like comedians का choice है, तो like ऐसा बोलते हैं तो लोग को इम्पैक्ट ज़्यादा होते हैं, लाइक ऐसा बोलते हैं मेरा आइडियोलॉजी है थी, लाइक इट्स ऑलवेज अ चैलेंज ऑफ हाउ द सेम पॉइंट आई कैन पुट अक्रॉस विदाउट without getting myself in trouble, that is always there. और कभी कभी like I drop a joke not because it's like I'm scared of something, but होता है तो like नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए ये joke. स्टैंड अप से हमें पता चल रहा व्हाट आर द इश्यूज ऑफ यंग मेट्रो ड्वेलिंग इंडिविजुअल्स हु आर लिविंग इन shared accommodations away from family, families in Bihar or families in Pune, and they are working in some metropolitan city. And तो अभी ये सारे सोशल प्रोसेस बहुत कुछ पता चल रहा है, यंग पेरेंट्स को भी पता चल रहा है, ओल्डर पेरेंट्स को भी पता चल रहा है, दादा दादी को भी पता चल रहा है कि जो 20s वाली जनरेशन है, अर्ली 30s वाली जनरेशन है, अब वो किस तरह जीती है. स्टैंड अप कॉमेडीज़ की वजह से पता चला है कि लिव इन रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, ये सारी चीज़ें हैं, और आप अपनी बिलीव्स को और अपनी ट्रेडिशंस को इम्पोज मत करिए. उस तरह से ये बहुत लिबरेटिंग है. ये अच्छा वाला बात है. लाइक इवन व्हेन आई स्टार्टेड कॉमेडी राइट एट 24-25, पहले फर्स्ट 3-4 years आई वांटेड यंग ऑडियंस, जेन ज़ी वाला 20-25 का ऑडियंस मिलना चाहिए मुझे, बिकॉज क्योंकि उनके पास टाइम है, उनके पास लाइक फर्स्ट जॉब, दे हैव मनी, टाइम, दे वर द ऑडियंस हु आर कमिंग आउट टू वॉच लाइव स्टैंड अप कॉमेडी एट दैट टाइम. उस टाइम पे पूरे कॉमेडियंस को उनको कवर करना चाहिए. लाइक अभी तो लाइक मैं 34 है, अभी मेरा पूरा टारगेट ऑडियंस चेंज हो सकते हैं. अभी लाइक मुझे नहीं चाहिए वो 20 का 25 सिंगल नॉर्थ इंडियन मैन. मेरा टारगेट ऑडियंस लाइक एवर सिंस स्पेशली आई स्टार्टेड द क्वाड्रेंट्स, ज़्यादा लोग आते हैं लाइक 50+, 40+. उस टाइम पे लगा था लाइक उन लोगों को मुझे नहीं समझ नहीं आते, रिलेटेबल नहीं है, कोई नहीं है. बट अभी तो आई एम अंडरस्टैंडिंग लाइक एटलीस्ट लाइक द ओल्डर जनरेशन हु आर एटलीस्ट वॉचिंग लाइव स्टैंड अप लाइक यू एंड योर काइंड एंड ऑल, दे आर ओपन टू द आइडिया ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. उनको नहीं चाहिए वो रिलेटेबल होना चाहिए. लाइक लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट समथिंग दे रिलेट टू, बट उनको they listen properly because they want to understand what this guy is saying. Unka listening capabilities like has reduced over for the smaller the younger generation. So it's for me like at this point when I'm trying to say something, I find it easier to perform into any kind of like 30+ age group compared to performing to a 20-22 audience. If 5 साल में मेरा change हो चुका है. And that is there. Like I think there should be both sides. As much as like the elder generation is trying to understand the younger generation has to try to understand the older generation. वो ऐसा नहीं हो सकते वो बूमर लोग हैं, मुझे उनको नहीं पता क्या होना चाहिए. They understand. People have like life experience. People have like a certain understanding and listening capabilities. As long as that is there, like people are like decent, like even elder, doesn't matter which generation, right? I think that more than that attention span is lesser for younger generation, which is much difficult to solve than this, like if it's the older generation, like I just have to maybe like thoda articulation change karna padega unko samajhane ke liye. वो भी challenge है, वो comedian का challenge है, I can take that challenge. But like if someone is not ready to, listen to anything that they can't relate to, उनको चाहिए वो कॉलेज का लाइफ के पता हो और गांजा के बारे में पता हो, वो सब लाइक वो 3-4 टॉपिक्स है, उनको बात करना चाहिए. इसके अलावा लाइक कोई भी बोल सकते हो तो दे जोन आउट. इवन इन लाइव शोज दे जोन आउट. So alienation in younger generation is more than older generation. I prefer older generation performing to anyone 30+ at this point of my career compared to younger people. And that is also developing a lot like you said, a lot more older people are open to the idea of stand-up comedy, of the idea of free speech. They have the patience to listen and try to comprehend, even though they don't agree or not.
उनको like sometimes they don't agree with what I'm saying, but they're ready to listen and try to understand, which is a skill I think like which is going away. Maybe young achievers are not that much rooted because एक तो वो locationally they are away from the scene from of family scene, and secondly they have their own justifications of living the life they are living. लेकिन मेरी एज ग्रुप और मुझसे जो सीनियर लोग हैं उनकी एज ग्रुप के लिए यंग जनरेशन को जानने के लिए बहुत बड़ी विंडो है स्टैंड अप कॉमेडी, वेयर पीपल आर enjoying समथिंग विच वी कुड नॉट हैव इवन इमेजिन्ड इन अवर 20s. तो ये तो बहुत बड़ा रिविलेशन रहता है. ये अच्छे वाला चेंज है, and I'm seeing Yes, that happening. it is. A lot Yes, it more is. people, retired people, older people are coming to watch live stand-up. Oh, YouTube में भी नहीं. Live stand-up वो आ सकते हैं. Like probably like 5 years back, I would have gotten scared seeing such people. And I would have thought like, oh my God, like what am I going to do with it? Now when such people come, like I am comfortable. I am like, I'm at least comfortable that they are ready to listen. They have the patience to listen. कभी कभी हो सकता है like उनको भी नहीं अच्छा लगेगा, वो कंजर्वेटिव माइंडसेट भी हो सकते हैं, like उनको कर्स वर्ड नहीं चाहिए, वो क्लीन कॉमेडी चाहिए, वो ऐसा बात नहीं कर सकते, वो भी हो सकते हैं. बट अ लॉट ऑफ पीपल हु कम at least to live stand up at this point, older generation, or really really good audience, and वो अच्छा वाला ऑडियंस, क्योंकि like उनको like limitations नहीं है, उनको अच्छा फनी लगेगा तो हंस गए. Like there are a lot of like like in between people, right? There's 30s people, they are the confused ones. Unko like they want to laugh at something, but they are like scared. Like they will look around, ऐसा हो सकता है, like oh judgment हो जाएगा, Should I, should ऐसा not like not kidding. I even tell this at some of my shows. Like some of my best audience, or mothers in their 40s and 50s. Because when they come out to watch a live stand-up, it's once in a lifetime opportunity for them. And when they come out, they don't care about any, like 50 people in the audience will be silent, they will laugh. Wow. उनको judgment क्या, फिकर नहीं है. yeah, वो ऐसा नहीं है. They if they find something funny, they will laugh. Even the husband sometimes will be like, oh my God, क्या हो रहा है? But like some of the best audience are this like kind of middle-aged women who are mothers, and especially mothers I'm saying, because like to leave a child at home and come to a comedy show is a big thing for her. Right. So उनको पैसा वसूल चाहिए उन शो में, उनको सबसा entertainment चाहिए. So इसलिए उनको नहीं, they're not scared about what other people is going to think. वो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है वो जानना. बहुत से मेरे एज ग्रुप के लोग जो बहुत अचीव किया जिन्होंने लाइफ में, लेकिन फैमिली लाइफ में नहीं गए, दे ऑप्टेड आउट ऑफ मैरिज, तो वो उनको भी तो ज़िंदगी में उनकी बात भी हो रही है स्टैंड अप में, और वो वहाँ जा कर के लिबरेटेड फील करती हैं, ज़्यादा अच्छा फील करती हैं. तो ये सिर्फ हाउसवाइफ्स की ही बात नहीं है, ये करियर वुमेन भी हैं जो जा कर के बात भी होता है. Like there is a comedian called Zarna Gag. Yeah, Zarna. Like she's doing amazing, because like there was a huge gap there. Yes. To fulfill like probably like there is an NRI, middle-aged men and women also, but majorly like mothers of that age, confused NRI mothers like that, or even Indian mothers. A lot of Indian people living in India also follow her, like because of that. That's what is not happening. I think slowly that will happen, because अभी तक इंडिया का कॉमेडी क्या होता है, तो like heartland of इंडिया, 4 स्टेट, वहाँ से 20 to 25 सिंगल मैन को क्या पसंद आते हैं, तो वो कॉमेडी है अभी तक. मेजॉरिटी होते हैं like 70-80% इस वो कॉमेडी है. और लोग नीच बनाता है, तो what these people didn't understand is like, even for me, like I didn't know there is a people in Delhi कल आते हैं, like at least 30 लोग आते हैं मेरे शो में. I didn't know like there are like, whenever I thought like I will sell out 30 tickets in Delhi, I thought it will be like a bunch of Tamilians or South Indians. कल आते हैं लोग, यूपी का लोग आते हैं, गुजराती लोग आते हैं, और like I didn't know people would want English comedy of my style of comedy, 30 plus, more slightly more matured or whatever. There is an audience for everything. But like लोगों को, comedians को, they should try it. If they think like this is what is working for 80%, so I will also try. I know like comedians who are in like 35, 30s plus still trying to talk about college life, Bumble dating apps जैसे बात कर सकते हैं, क्योंकि like वो सेल कर सकते हैं, वो वायरल हो जाते हैं. उनको like try करने, like that's the thing, right? If people don't want to take that's stale now. It's like they don't want to take that unknown territories to find out like what more audience can I get. What are the other kinds of audience I can get? Those chiefs होता है like वो North Indian belt का, हिंदी वाला
कॉमेडियंस और होता है वो कॉर्पोरेट कॉमेडियंस, वो आईटी के बारे में बात करना, वो प्रोजेक्ट मैनेजर, ये भी सबसे बड़ा नीश है इंडिया में. बट आई फील लाइक मोर कॉमेडियंस टू चैलेंज एंड टेक other routes. The third route, like a niche route people take, is like be fully political. Right wing को shit on them so much that you will get left wing audience. ऐसा हो सकते हैं. And like in US and all, there is another fourth niche where like they shit on left wing so much so the right wing people come. अभी तक like India में ऐसा comedian नहीं है. At least like that's the new age stand-up comedy I'm talking about. I don't know about like the. I don't know about West much, but in India we hardly see any right-wing comedians. We see right-wing people hitting comedians most of the time. Because people are not daring to. I feel like comedians should do that also. I know people, lot of people, full right-wing comedians who are full right-wing. They won't come out openly in public because like at least in stand-up comedy, being left-wing is cool, or else you be neutral. I'm like, if you really believe in that, then go for it and do that. No? Can you imagine bigotry becoming comedy? जो राइट विंग है, bigots जो हैं, जो those who are full of hatred or reject others, I mean any kind of other, whether it is language, whether it is culture, whether it is religion, whether it is whatever it is. So those who reject and cancel out everyone, तो वो comedy कैसे करेंगे? That would be a very small esoteric group talking about themselves and justifying their privileges. I'm not saying only they should do comedy. As a comedian, what I believe in is like there is no right or wrong in comedy. मुझे voices चाहिए, मुझे हर तरफ को voices चाहिए. मुझे ज़्यादा जैसे like mothers should come out and do comedy, like a 80-year-old South Indian rural old man should come out and from a village to come and tell stories. मुझे लगता है comedy stories के बारे में. Yes, it is about experiences और voices के बारे में. Yes. And उस voices में right wing का voices भी आना चाहिए. बिल्कुल. How will I know? Like how you are learning from the what younger generation from South India or anywhere else is talking about. If I have to learn like what exactly is going on in a mindset of a UP ka right wing. Somebody like you who doesn't identify yourself as a right wing or left wing has to do their part as well, because right wing में मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा कि उनके अंदर creativity हो. They just have anger. टेल मी, क्रिएटिविटी. अभी इतनी फिल्में आई, इतनी बकवास फिल्में बनाते हैं ये लोग. अभी केरला फाइल्स आ गई और बहुत सी फिल्में आ गई जो इट इज़ आउटराइट हेट्रेड दे आर पोर्ट्रेइंग. मोर वायलेंस, मोर एंगर, मोर हेट्रेड, दैट्स इट. तो राइट विंग कोई भी काम आर्टिस्टिकली कर सकता है, एस्थेटिकली कर सकता है, ये मुझे डाउट हो गया है. इसलिए उनको चाहिए कॉमेडी, आर्ट चाहिए. You do it for them. To reduce that anger, to calm themselves a little bit more. I think like that only, like you said, exactly right. Maybe these are interconnected. Yes. When people start to express themselves artistically, anger कम हो जाता है. Calmness बड़ा हो जाता है. और एक satisfaction आता है that you have communicated in a beautiful manner. Exactly. So this satisfaction of being human and being humane and communicating to the larger people, not just your own like-minded groups. तो वो जो attempt है वो intelligent attempt है. Intelligence का anger से क्या लेना देना? It has nothing to do with anger. Either you are intelligent or you are perpetually angry. How can you be both? You can't be. तो ये जो paradox है right wing का कि they don't have creative people. ये I think it comes from this place where anger is everything. I don't believe there are like creative people, non-creative people. That's why like the same argument is like what I'm suggesting. If right-wing people try to be more creative, like नहीं आते तो नहीं आते, like first they have to calm down. They will calm down a little bit, vent it out in a public, in a closed space, whatever. Whether you're going to come across as a bigot or a righteous person is a different thing. But the moment you try to express, ड्रा कर दो, म्यूजिक कर दो, कोई भी कर दो, काम हो जाता है यार. आप or like you will open up to like more new experiences in your life. That is when like this conservative mindset will slowly shift to like doesn't have to go full left at that point. True. Even if it comes to a point of rational thinking and sensibility, it's a big change, right? right. Right wing people जिनको नापसंद करते हैं, जिनको अच्छा नहीं मानते हैं, उनकी ज़िंदगी का जो कंट्रडिक्शन है, जो हिपोक्रेसी है, उस पे बारे में बात कर सकते हैं आर्टिस्टिकली, और वही कॉमेडी हो जाएगा.
लेकिन वो इतनी मेहनत नहीं करते हैं. दे आर लेजी पीपल. आई थिंक एंगर दे जस्ट वांट टू हैंडल एवरी सिचुएशन विद एंगर एंड हेट्रेड. दैट इज द प्रॉब्लम, आई थिंक. It is definitely that. I feel like majority of right wing, at least in India, वो लोग बोलते हैं ना, like there are higher frequency vibrations of joy, peace, happiness, वो सब होता है, और lower frequency of fear, hatred, anger, वो सब होता है. It's very naturally the right wing pulls you down to the lower energy vibrations. ये क्या है मुझे बताइए. आई डोंट नो अबाउट इट. Okay, वो थोड़ा spiritual बात हो सकता है. प्लीज. ओ लाइक दुनिया का लाइक पूरा what is life, like you want to live life and you want to be in like better emotions, in higher energy emotions like happiness, peace, calmness, love, creativity, art, whatever. And then there is like lower frequency vibration which keeps you in a lot, constant sense of agitation, and these are like hatred, anger, fear, insecurity, anxiety, depression, ये सब होता है. And if you clearly see, like right wing tries to pull you down to those lower emotions, where like you are constantly afraid, oh, minority को क्या होता है, minority हमको job छोड़ेंगे, और हमका anger है, उनको we have to kill them or whatever, और like सब emotions ऐसा है. कहाँ है right wing में, joy और happiness, like divinity है. maybe like little bit of spirituality है, और religious हो, पूजा कर सकते हैं. रिचुअल्स है और उनको भी like लोगों को नहीं पता चलेगा वो क्यों आते हैं वो rituals. And that's why like I'm against right wings. I'm not against like Indian mythology or Hinduism per se. Because there is a reason why a lot of things now are considered as healing mechanisms to take people to higher. Religion itself is supposed to do it. Any kind of religion. Islam भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, Christianity भी हो सकते हैं. The whole idea of a religion is to keep people at an individual level at these kinds of higher vibration emotions of happiness, peace, prosperity, love, and all that. And if you're using the same religion in the name of right wing to bring them down to a lower energy vibration, then what's the point of it? Wow, I'm very happy that you brought up this lower energy vibration and a higher energy vibration. I'm going to read about it now. मुझे भी like थोड़ा spirituality होता है. Like I meditate a lot. I've done Vipassana courses. I've done bunch things, and these are like very experiential understandings I've had, not just reading books or whatever. At the end of it, like people need to be in a higher energy vibration of like fear, especially fear, right? It's like the lowest of vibrations, if you can really understand. This has been told in Hinduism, African traditions, everywhere. Fear is the lowest of vibrations and love is the highest of vibrations. And everything is in between. And if you're constantly trying to keep people in fear, you're not going to have a very happy life at the end of it. Oh. सो ऑडियंस को ये बात बताने की है कि आपका कोई भी लीडर, स्पिरिचुअल लीडर हो या सोशल लीडर हो या पॉलिटिकल लीडर हो, अगर वो आपको फियर में रखता है तो वो आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है. वो आपकी ज़िंदगी से वो जो ज़िंदा होने का जॉय है, जो खुशी है, वो ले रहा है. तो गेट आउट ऑफ द फियर फ्रेमवर्क. किसी भी तरह के फियर में नहीं रहना है. Definitely. And this is what like different kinds of teachings I've told in different ways. Like this is what ancient yogics tried to teach through yoga and meditation and whatever. This is what Buddhism tried to teach. And like my personal favorite psychologist hota hai Carl Jung naam pe. Yeah, Carl Jung. And his teachings say the same thing in a very psychoanalytical level. But and very atomized. Yes, I know. Like I don't know if anyone wants to read it. One of the best books I've read in my life was The Map of the Soul by Carl Jung. It is an articulation of his teachings, but it gave me a lot of clarity on like what is essential. And when I went and came back to actual Buddhist teachings or Hindus, mythological figures and all, it's all saying the same thing. At the end of it, this is like everything is vibration. Yeah. And whole life is like, even in the Vipassana meditation I do, right? They say everything is a matter of mind and matter. One is consciousness and the energy around the consciousness. And mind has to be stable and energy has to vibrate in a good frequency. This is all, mind stable, matlab like there should be mindfulness. Yes. There should be awareness. There should be consciousness. And around that goes energy. Even like Hinduism में क्या होता है, शिवा और शक्ति, ये भी होता है. शिवा कॉन्शियस नहीं है और शक्ति एनर्जी है. उनका मैनिफेस्टेशन है. Like people don't understand all this and like, and they constantly try to bring the energy down vibration now, and run a whole country based out of fear. Yes. And I don't know, but you can't help it. Yeah.
मुझे ये लगता है देयर आर सर्टेन कंपल्शंस ऑफ डेमोक्रेसी वेयर यू हैव टू फ्राइटन पीपल टू ब्रिंग देम टुवर्ड्स योर सेल्फ एंड मेक देम वोट फॉर यू, सपोर्ट यू, एंड यू नो इट इज़ द एक्चुअली डेमोक्रेसी, ये वाला जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, इट इज़ प्रिटी न्यू टू अस. हमने ऐसी डेमोक्रेसी तो कभी नहीं देखी थी ना पहले. तो अभी लोगों को ये लगता है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द गुड वाइब्स दे आर गोइंग फॉर द नेगेटिविटी टू ब्रिंग पीपल टुवर्ड्स देम. और ये बहुत बड़ी क्राइसिस हो गई है डेमोक्रेसी की हर जगह पर. इवन इन यूएस ऑल्सो आप देखिए, वो जो वहाँ पर भी पॉलिटिकल जो इलेक्शन प्रोसेस है वहाँ का, वो भी बहुत हेटफुल हो गया है, और हमारे यहाँ तो हो ही गया है. तो ये आई थिंक इट इज़ द पुल्स एंड प्रेशर्स ऑफ our electoral system that is leading us to this kind of situation. At the end of it, people want power, people want money. Right. I don't know whether they want money for power or power for money. Yeah, but means are also important to get there, you know. And the end is power, but the means to achieve that is something where that has to be very humane. Because but it become at this point it has become a business for them, in the sense like it's not even like, you know, it is a very, very strategic move. Yeah. You know, the government, people in power want more power. They want the vote in the next time. Yeah. And they can do a lot of developments, infrastructure, education, healthcare, सब होने के बाद एक ROI है, vote का ROI. You know, if they realize like this ROI is much, much lesser than when just I can spread hate speech and I can get a greater ROI of vote bank, right, they're going to take that approach. Exactly. And that's what is happening. Like more than like if people do development, infrastructure, railways, roadways, people still criticize. You know, they're still not going to change the vote bank. So ROIs of vote is one thing, but the accumulation of the whole of natural and human resources from equity-based distribution to, you know, amassing it at one place, that is also a problem. That is why we are talking about capitalism and crony capitalism also, right? तो अभी हमारे जो नेता पावर में हैं वो हमेशा रहें पावर में. दे why can't they create a welfare state where people are happy and people are voting them in again and again? So ये भी तो एक अगर आपको पावर में रहना है तो लोगों को खुश करके, लोगों का दिल जीत के, उनको आप इतना खुश करें, इतना दिल जीतें कि वो आपको बार बार वोट इन करें, बार बार आपको लाएं. ये डिस्कोर्स नहीं है. हम काम जनता का काम नहीं करेंगे, हम अपने दोस्तों का काम करेंगे, लेकिन हमें फिर भी पावर में बने रहना है तो हेटरेट से बने रहना है. तो ये बड़ा सिंपल है. Anyway, let us don't go into politics. And that should also come from a point of trust, right? Because like people in power also are functioning at a point of fear. Because वो उनको होना चाहिए कि नेक्स्ट इलेक्शन में इनमें जीतना चाहिए. No, and the easiest way to even in the next election is to go for this you know, hate speech and whatever, rather than going for actual development and Yes. And I said, like what you were saying, like equity is important. Like अभी तक होना है ना, like there's a huge debate on, you know, South का tax North को आएगा. You know, उनका डेवलपमेंट है, उनका you know रेवेन्यू है, पर बिहार और यूपी को जा सकते हैं. लाइक एंड माई क्वेश्चन इज लाइक डजंट मैटर, इट्स ओके, वी आर इन इंडिया व्हाटएवर, बट वहाँ क्या होता है? क्यों अब तक बिहार के लोग कोयम्बतूर आते और कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर का काम करते हैं? इफ यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग द टैक्स मनी ऑन दीज स्टेट्स, वेयर इज द डेवलपमेंट देयर? वेयर इज द एम्प्लॉयमेंट देयर? You know, Raj Thakre asked this question फ्रॉम एन ओपन फोरम कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने नेताओं से ये पूछना चाहिए कि आपने हमारी ऐसी दुर्गति क्यों करी है कि हमें कहीं और जा कर के जलील होके, बेइज्जत होके काम करना पड़ता है सिर्फ जिंदा रहने के लिए. वहाँ पर जा कर के वो अंबानी नहीं बन जा रहे हैं, अडानी नहीं बन जा रहे हैं. 200 रुपये 300 रुपये है ना, लोग काम करते हैं. मिनियल जॉब्स, उतना सिर्फ जिंदा रहने के लिए जहाँ पर वो पैसा कमा रहे हैं, उतना भी पैसा वो अपने जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ उनका घर है, वहाँ नहीं, अपने स्टेट में नहीं कमा पा रहे हैं. तो ये अटर फेल्योर है हमारी पॉलिटिशियंस का, जो नॉर्थ इंडिया के बीमारू स्टेट्स हम कहते हैं. उसमें बिहार से हम स्टार्ट करते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश एटसेट्रा. तो बीमारू स्टेट्स के लोगों को अपने नेताओं से ये सवाल करना चाहिए, बजाय इसके टेलिंग पीपल फ्रॉम ऑफ बैंगलोर और पुणे एंड मुंबई दैट प्लीज टॉलरेट अस, प्लीज accommodate us in your system, in your society, because our leaders are failing us. And the trend is not changing. That's the worst part. You know, मुझे नहीं बोलते थे वो लाइक एक दिन में सबको एम्प्लॉयमेंट आना चाहिए, बट एज अ साउथ इंडियन आई एम टेलिंग राइट, आई कीप गोइंग टू चेन्नई, बैंगलोर, आई सी इवन कोयम्बतूर और इवन रिमोट प्लेसेस इन नीलगिरीज, ऊटी जैसा होता है. एंड इट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स, द फैक्ट दैट एवरी कंस्ट्रक्शन वर्कर देयर इज मोर एंड मोर बिकमिंग people from these states.
And every year, like a lot more people are moving there, which means like the trend is not changing. Right. Trend is not like people are moving back क्योंकि like यूपी बिहार में like job अभी आ सकते हैं. Yeah. Like more and more people every year in the last 10 years have moved to these South Indian states for like very menial jobs like this. नॉर्थ के बारे में साउथ के लोग किस तरह सोचते हैं, पर्टिकुलरली दिल्ली और उसके आसपास के जो स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इनके बारे में इम्प्रेशन क्या है अबाउट द पीपल? पहले देयर इज एन असम्पशन और आई थिंक इट्स रियलिटी, वो सब लाउड है. प्लीज. ज़्यादा लाउड है. अभी तक मैं I was traveling through Uttarakhand. I was on a trek recently, right? And I actually started feeling the saddest for two states in the country, Uttarakhand और हिमाचल. वो पहाड़ी लोग like इतना chill है और इतना peace के बारे में like they want to live a peaceful life, right. But day in day out they have to meet people from like Harrier car, Thar car, हरियाणा से आते हैं, यूपी से आते हैं और सब loud है, and like just like the feeling of aggression all the time. I don't like, and I feel like that's again, like I said, like when people are operating at that lower vibration, there's a constant sense of agitation, anger, aggression, and हो सकते, it's not like South Indians are very silent all the time, or it's ऐसा लोग नहीं सकते, like the ratios are different, that's it. ऐसा लोग like तमिलनाडु भी मिल सकते, like ज़्यादा aggression, ज़्यादा anger, power चाहिए, fear चाहिए, ऐसा लोग होता है, like but here you can see more evidently, like as a guy at least like who has come more often to the north, performed here, seen people here, and I've observed people and all that. Like I think like firstly log they're like louder, I would say. Secondly, ज़्यादा ignorance भी है साउथ के बारे में और इंडिया के बारे में. और like you said, like वो 3-4 स्टेट होता है, like पावर सेंटर यहाँ पे है, वो उनको लगता है ये इंडिया है. That is my biggest request or suggestion or whatever for these people to try to understand what India really is, what that diversity of like the mass of India really is. वो कैसे होता है, like, and it's not surprising, like if these guys cannot understand how Uttarakandis or people from Uttarakhand and Himachal think or act, or like the way of thinking of Pahadis, they're definitely not going to understand how South India thinks, or a guy from Tamil Nadu thinks, or a guy from Northeast Imphal thinks. You can probably start from here. And it's not like hatred I am spreading, and it's like every time I go to Uttarakhand, or Himachal, the cab drivers get agitated. They react very differently to a guy coming from South Chennai. Like they are more respectful and more calmer with us compared to when they see a guy from Delhi coming and sitting in their cab. And if you observe that properly, you will understand क्या गलत है. सुप्रीम कोर्ट को एक ऑर्डर लाना पड़ा था कि आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये वाले नामों से नहीं बुला सकते. द स्लर्स दैट वर बीइंग यूज्ड फॉर द आइडेंटिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपल, तो उनको उसमें पेनाल्टी और प्रिजन दोनों लाना पड़ा था कुछ वक्त पहले. तो जो अपार्थाइड जिसकी हम बातें पढ़ते रहते हैं अबाउट वेस्ट, ब्लैक एंड अदर पीपल, वो अपार्थाइड यहाँ पर प्रैक्टिस हो रहा था. एंड वी आर कंटिन्यूसली इन अ डिनायल मोड. नॉर्थ ईस्ट इतना बड़ा हमारा रीजन है, और उसके बारे में, उसके लोगों के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में, एंड द मेन स्ट्रीमिंग, इट इज़ सच एन ऑप्रेसिव थिंग, द मेन स्ट्रीमिंग ऑफ योर आइडिया ऑफ ब्यूटी, योर आइडिया ऑफ जोग्राफिकल फीचर्स एटसेट्रा, एवरीथिंग. तो नो डाउट हम बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ अपार्थाइड होती है, और हमें पता भी नहीं है, और हमें उसका पता ही नहीं, उसका नाम भी क्या है जो हम करते हैं नॉर्थ ईस्ट के साथ या साउथ के साथ. या हमारी जो हिंदी फिल्में थी वो तो हर एक को मद्रासी बोलती थी ना पहले. उसके बाद उनको पता चला कि नो, एवरीवन इज नॉट मद्रासी. And even like this is a joke, whenever I performed in Northeast, this is a joke I actually do. Like whenever I meet anyone from Northeast India, we start bonding immediately by shitting about Delhi people. Oh, I saw, and it's not like South people understand Northeast people, or Northeast people understand South people pura. But there is a fundamental understanding here कि this is also India, this is also India. People are diverse. As much as that leads to a little bit of respect and an openness to understanding and listening. Right. And ये तो like अच्छा है. Like abhi tak, like forget people in Delhi. Like this is an actual incident that happened in a comedy club in Bangalore. Late night का show है, ज़्यादा
यंग नॉर्थ इंडियंस आते हैं वहाँ पे, और उस टाइम पे एक श्रीलंकन कैनेडियन तमिल गाय वो सिटिंग इन द ऑडियंस, और होस्ट को पूछता है आप कहाँ से है, वो बोला लाइक मैं श्रीलंकन कैनेडियन हो पर तमिलियन है, एंड नॉट किडिंग there is a guy on the left on something who in Bangalore, in a comedy club in Bangalore, shouted, "Hey, oh, Chutia Madrasi." And this was in Bangalore. Who was this guy who called out in this way? Some audience member. I mean, can you make... मुझे पता नहीं, but like you can see that it's like that 20 to 25, like you said, Bimaru state का एक बंदा है. And this is like the comprehension and the hatred level that's happening in the country. And hatred without reason. Exactly. So, but like, that's what, right? In that comedy club or whatever, that space, these guys start feeling like we are in Delhi. और बैंगलोर में ऐसा होता है, लाइक ऑफिस में होता है, लाइक कभी कभी टीम से लाइक ज़्यादा ऐसा लोग होते हैं, तो लाइक इफ अ गाय लाइक वी स्पोक प्रीवियसली, वॉचमैन वो बोलता है तो मुझे समझ नहीं आया था 423 क्या है, अंडरस्टैंडेबल, एंड दैट्स द रीज़न आई लर्न हिंदी. वो ट्रैवल करने के लिए इंडिया लाइक नॉर्थ में चलाने के लिए हिंदी चाहिए, वो ड्राइवर को लेके के लिए, वॉचमैन लोग के लिए. आई हैव वर्क विद कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक फ्रीक्वेंट इंग्लिश, स्टिल डिनाइड टू स्पीक in English. They speak in Hindi in a team setting, in a team meeting, a professional official meeting. Why? As long as like they have the majority, they will do it. They don't care about like 2-3 people who whether they understand or not, because the recognition is not that. They think like, oh, sabko samajh aata hai. If you don't understand Hindi, why are you in India? Why are you in an office in Bangalore? And I have always fought for it. And never like when I used to be in corporate in such meetings, and whenever anyone opens, I am okay to like if cafeteria में चला गए, बात कर सकते हैं, उस टाइम पे कभी भी चले गए, वो प्राइवेट सेटिंग है. बट ऑफिशियल मीटिंग में कभी कभी लोग जो शुरू होता है हिंदी में, आई लाइक स्टॉप इट, दिस इज ऑफिस, टॉक इन इंग्लिश. एंड कभी बोल सकते हो, बट सबको समझाते हैं, तुमको भी समझाते हैं ना, लाइक आई कैन अंडरस्टैंड. Even for me, right, the whole conversation is almost 2x the mental effort I have to put to understand a conversation in Hindi compared to when I have to understand a conversation in English. That mental effort, why should I put in an official setting? It's not just about like understanding, not understanding. There's a lot of nuances to it that people don't understand. Yeah. Really surprising that, when there was some agitation against Hindi billboards and Hindi signs in Bangalore, all of North India, particularly the Hindi-speaking people, were so agitated that how can they deny Hindi language, Hindi alphabets or Hindi script, etc. The Delhi dwellers feel that they are the entitled ones, they are the one who should, they are the privileged one, their privileges are justified, and rest of India is there to serve them. They are the periphery there, and Delhi is the core. So if we take this core to South India and create and relocate the national capital to some South Indian town, or create a new town in South India where other linguistic identities are comfortable and are happily getting the services actually within the government setup, within the central government setup. So lot of things can be addressed, because locational advantage दिल्ली का बहुत ज़्यादा हो गया है. और दिल्ली वालों को अब ये बात समझ में आ नहीं रही है कि, और जबकि दिल्ली वाले लोग बाहर दुनिया में सब जगह जा रहे हैं. दिल्ली के लोग सिर्फ बेंगलोर ही नहीं जा रहे हैं, यूपी के लोग बेंगलोर ही नहीं जा, और दूसरे कंट्रीज़ में भी जा रहे हैं. फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि लैंग्वेज जो है वो इतनी बड़ी आइडेंटिटी नहीं है आपकी कि उसके साथ एडेयर करना है ही करना है. आई डोंट नो हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अभी तो मैंने 3 एपिसोड्स किए हैं सिर्फ इसी बात पर, हाउ नॉर्थ इंडियन पीपल आर स्पॉइलिंग द इमेज ऑफ इंडिया इन कनाडा, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल दिस प्लेसेस. और मैं सच में मुझे डर लगता है कि फॉरेन ट्रैवल करने में, जस्ट बिकॉज समबडी इज़ लेबल्ड एज इंडियन, मे हैव टू फेस सम काइंड ऑफ discrimination and hatred, because Indians' image is really getting a... It should start with certain level of acceptance, right? Like even in spite of whatever you're talking about, the differences, the diversity of India, even in my comment section or sometimes people get offended when I use the word North India, South India. Like, oh, कैसा हो सकता है, हम सब इंडियंस है, वो पैट्रियटिज्म कहाँ है आपका?
you know. They get angry at it, you know, just the fact, like the basic acceptance that yeah, we are a country, we are a single country, politically and geographically, whatever. It's a conglomeration of different states, you know, with different backgrounds, different languages. You know, that's what the Constitution recognizes. That's what the initial thing says. You know, that's why True. you know And unity in diversity has been our mantra. The national, you know, and the national anthem says like you know, Punjab is Sindhu, Gujarati, Maratha, Dravid, Utkalavanga. You know, that is the reason it was written that way, to recognize the diversity, still becoming a single state that, you know, adjusts and whatever. Right. But the more narrative is becoming more and more that like, oh, एक ही country है, एक ही भाषा है, एक ही मिनिस्टर है, और ये सब एक ही होना चाहिए, पावर सेंटर ऐसा होना चाहिए. Why are you making a country that is fundamentally heterogeneous in nature to become a homogeneous group of people? You know, Bollywood है हमारा, वो कैसा हो सकते हैं? और whatever Bollywood says is Chennai is Chennai. Yes. असली चेन्नई में क्या होता है लोगों को पता नहीं चाहिए. उनको लगता है कि लाइक वो चेन्नई एक्सप्रेस वो बोलता है, लाइक सब मद्रासी लोग रासकला बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं. I have, in my 34 years of my life, I have never seen a single South Indian say Raskala. Oh my God. और ये कॉमन सेंस बनाया फिल्मों ने. Yeah, these are the filmmakers sitting in Bombay. Right. And I'm sorry to say it, I have a bigger beef with Bombay filmmakers than people in Delhi. वो जैसा होते हैं ना, like आप बोलते थे, like you know, Delhi वो political power का center होते हैं, ऐसा Bombay का attitude है, like वो हमारा financial power का center है, और Bollywood का Indian cinema का center है, वो जैसा वो attitude होता है, like it's not good. Yes. And that's why they create more and more bad art. Right. Compared to the rest of the Malayalam filmmakers are making much better movies. True. Compared to Bollywood, because their attitude has to change. The fundamental understanding, like abhi tak, forget Chennai Express 15 years back. You know, 2 months back they released Paramasundari with like a you know, which is like a completely stupid interpretation of how Malayali is. It's because randomly a girl is climbing the coconut tree for no reason. I'm like, first you have to accept that you are not the center of the universe. Not take yourself seriously. Open and accept the fact that India is diverse, and I will do my best. You don't have to understand anything. Everything. I mean, it will take a lot of time for you and me also to understand the whole of India, you know, to कब subculture में क्या होता है, नागालैंड कैसा होता है, you know, उत्तराखंडी का culture क्या है. It will impossible for anyone in their lifetime to understand the whole of India for what it is. But the acceptance that India is diverse, people have their own emotions, own culture, own movies, own kind of critical thinking, is the base of all. When you sit in like a power center like Bombay or Delhi and start claiming that, hey, मुझे सब पता है, and whatever I say is what India is, you need to get away from that attitude. Especially filmmakers from Bombay. I'm telling it time and again, you know, or even comedians from Delhi. Right. When they think like, oh, hey, वो क्या होता है, like I you know, when I go to US I sell 1,000 tickets, so I'm India. ऐसा नहीं है, वो like population ज़्यादा है बस. ऐसा नहीं है like, oh, if you sell 1,000 tickets, you are what India, you are an Indian comedian. Just because I'm selling 500 tickets, I am not an Indian comedian. I'm an English comedian. I'm a South Indian comedian. ऐसा नहीं है, सब इंडिया है. Either be of the narrative like the all of India is, you know, equal opportunity, equity बनाते, or say like, okay, we are the power central. Don't act like, oh no, oh, India है, हम सब एक है, unity in diversity है, but act like you are the center of the universe. Yeah, the hegemonic attitude has to change. When we do the feminist critique of Bollywood or Hindi film industry, we do underline the fact that the feminine identity of South India has been sexualized in Hindi films like anything. Most of the sex bimbits will come from South Indian, society, and North Indian women were depicted as the very Devi-like, godly and very, unsexual or non-sexual or asexual or whatever. So जो साउथ इंडियन महिलाएं हैं वो तो सेक्स सिंबल्स होंगी और उनको कपड़े वैसे पहनाए जाएंगे और उनका रोल उस तरह से आएगा. तो जब लाइट आइड ऐश्वर्या राय वन दिस मिस यूनिवर्स व्हाटएवर मिस वर्ल्ड, तो उसके बाद से फिर द आइडिया ऑफ ब्यूटी, तो उसके फिर वो थोड़ा सा गोरा रंग और लाइट आइज और ये सब, फिर वो कैटरीना कैफ और ये सारा कुछ हुआ और बीच में सेलेना जेटली सब आया.
आई शुड नॉट बी टेकिंग नेम्स, लेकिन ये हुआ है कि शिफ्ट हुआ है. अदरवाइज आज से 30 साल पहले तक सेक्स सिंबल साउथ इंडियन हीरोइंस ही होती थी और उनको वैसे ही रोल्स दिए जाते थे, वैसे ही कपड़े पहनाए जाते थे. तो ये भी द फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ बॉलीवुड इज दिस. And especially when it comes to, I think, women especially, right? I think they have built a whole narrative. It's like South Indian women, darker skinned, or, you know, like you said, more sexualized. Yes, or like, you know, they are like beneath all this Devi Yeah, Jaisa yeah. figure. You know, Yes. they are like, they're not like goddess figure. They are just like, you know, some Yeah. women. I think that narrative has existed, and Bollywood time and again has stereotyped it and Exactly. made it easier, actually. Exactly. So we do talk about it when we do feminist critique of Bollywood. तो लेकिन वो कॉमन सेंस नहीं है. जो हम लोग एकेडमिक बातें करते हैं वो कॉमन सेंस नहीं बन पाता है. लेकिन अभी तो ग्लोबल हो गया है और करण जौहर, यश चोपड़ा की फिल्मों ने फैंटेसी को, मेल नॉर्थ इंडियन मेल फैंटेसी को वेस्ट की तरफ ले गया है. तो That's what it's a bunch of at max 100 people sitting in Bandra and Andheri deciding the taste of movies in India. Right. It's not supposed to be it. And there is, you know, there are independent industries that are blooming now. You know, obviously Malayalam, you know, Tamil has had, Telugu, or even like Bengali films have always been great. But why is Indian cinema, if someone says, why is it Bollywood? Why is it considered Bollywood? Or and then you have to say like, oh, no, South Indian ka cinema. You know, and these guys have represented a lot more better movies. You know, and it's not just about Bollywood. I'm not against Bollywood or like indie movies per se, but it's just like the, you know, power center, like you said, a bunch of 5 families in Bombay sitting and figuring out or deciding. That's why it's all so shitty. That's why you can see outright that this guy hasn't gone out of that Worli area and gone out and seen the country. Even if he has seen, he has probably seen. He has traveled, but he hasn't observed. He hasn't seen. Yeah, and maybe when you go somewhere like a proprietor, like a you know, somebody who owns the place, तो आप उसको उस तरह नहीं देखते हैं कि they are equal. True. तो आपको लगता है कि ठीक है, वो सब it is our fiefdom. सब वर्कर्स है. हाँ, सब हमारे मालिक है. हम मालिक है. तो वो मालिक सिंड्रोम तो है ही. नवीन, आपके लिए कौन कौन से सोशल कॉज ऐसे हैं जिनको आप सिर्फ कॉमेडी से ही एड्रेस करना चाहेंगे, या आपको लगता है कि यस, इफ आई एम डूइंग कॉमेडी आई शुड ऑल्सो ब्रिंग इट अप? इज देयर एनीथिंग दैट malaise ऑफ सोसाइटी, समथिंग दैट सोसाइटी नीड्स टू थिंक अबाउट एंड यू वांट टू ब्रिंग इट अप? I don't know if it is, I'm really political per se, but like I said, I will consider myself spiritual more than political. And time and again, like even the whole quadrants thing that is working, that fourth thing, what I try to say, or I don't know if it coming out like very outright for people who keep seeing it, but the idea still remains the same. My idea is to finding out silence amidst chaos. You know, it's finding balance between the extremes. Tell me more about that quadrant where you are talking about majority and how majority is a fluid idea and how different majorities are construed in a same space and time. I don't know. That was an idea I had for a while to give my interpretation of how the majority, minority, and power structure works. And what I did finally was like a thinking of almost 2 months to finally get it to that level of. And even that I wasn't very happy because I tried to make it funny initially. And at one point, that is, if you have seen all my quadrants, you would have seen like that's one of the very few quadrants there's no jokes at all. Because I didn't want to dilute the idea and the interpretation with jokes. And the idea was simple. Like the idea was to understand that power structures keep playing the game of majority and minority to keep us poles apart. Whereas we don't understand, it's like we are 2 sides of the same coin. There are like nice people everywhere, and the more, you know, it's a simple thing, right? It's again like a psychological thing I studied long back. You know, whole of society, whole of history is like a sand clock. Jaisa hota hai. Like, and like every time the clock keeps shifting. Yes. You know, and every time they put a clock in a new position, there will be only initially few people who, you know, go from, you know, lower level of consciousness to higher level of consciousness, or higher level of living, or like a better living, whatever. And only towards the end, like there will be more pressure, and then that more thing comes out. And this is what
the So base idea Sandcloth, was. maybe it is the reality of our society and of the phases we go through, but somebody essentially becoming the bottom and somebody then that is a very painful thing. We should have another model to No, ऐसा होता है कि like any change in society needs an initial set of people who take that leap of faith and go towards righteousness and what they believe in instead of people. And obviously there will be like a herd mentality of the majority, right? But then like there's a small section that will stand for what is right and wrong, or they have the critical thinking. They have to take, and like the problem happens is like when there is no such section. Like any change in great societies have happened because like a bunch of people or one great leader had so much conviction in an idea or a thought that like, and the power of idea and like concentration is so much enough, like he got his initial set of followers and that leads to more set of followers, and like the mass will become the last set of people who come and join them only when they figured out, okay, this comes kar sakte hai. But Right. of late that leap of faith is becoming less and less. We are seeing lesser leaders, lesser like, and it like the more fragmented the society is, the more they try to keep like people by themselves. There's no community living, there's no idea of community, there's no idea of one India or whatever. So that initial set of Sandcloth के नीचे आने वाले लोग नहीं है अभी. So that whole majority minority thing was to let's, doesn't matter what the structure is trying to say. As long as we are strong with what we think and what we have seen in my life, I've never seen any minority as a threat to me or like harm to me. But why is it that being the whole narrative of India itself currently, the majority narrative is like they are a threat, they are dangerous. Yeah, and it is prima facie, it is so flawed. Right? Majority is afraid of a minority. I mean, this is something. Why? I mean, are you that weak? In spite of having the number in your favor, you don't trust your what should I say? I mean, the basic instincts you don't trust. So this is something very stupid. I mean, It is, but it serves that narrative, right? That's where, like I said, that's where the ROI of vote bank is. The Right. more you keep these people in fear without making them think so much, if they start thinking like what you think, like the whole power is gone. yeah, 80 लोग वहाँ खड़े हैं, 20 लोग यहाँ खड़े हैं. 80 लोग 20 लोगों से थर कांप रहे हैं डर के मारे. मैं वर्ड, अगर आप यू डोंट से एनी वर्ड, ये कैसे दिख रहा है? आई मीन कैसे हो सकता है ये कि इतने लोग इतने कम? That's where the narrative comes into place. The narrative is so strong, they keep that 80 people in fear. अगर आप और ज़्यादा रियलिस्टिक पिक्चर बनाएंगे तो उन 80 लोगों के हाथ में तलवार भी है, त्रिशूल भी है, भाला भी है, पुलिस भी है, उसी 80 लोगों में खड़ी हुई है, पावर भी है, मंत्री भी उधर ही खड़ा हुआ है. मतलब हर वो चीज़ जिससे दूसरे लोगों की ज़िंदगी को आप इम्प्रेस कर सकते हैं या अफेक्ट कर सकते हैं, वो सब आपके पास है. और ये इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है और ये लोग पुअर भी हैं. No, that's why they go for the next level of narrative, right? वो बोलते हैं हमके पास तलवार है पर उनके पास बॉम्ब है, उनके पास and people buy into this narrative. People buy into the okay, then we have to be afraid, then we have to be whatever, I don't know. Like that's what like time and again. What I feel is like at least something I can do with the limitations of being a comedian is not change political scenario or whatever. Like if the more people in the 80 you're saying, right, one by one, if they start thinking for themselves, some level of critical thinking, if you can increase. But I think that's the only way. It will be very slow, like a Sandcloth. Yeah, but when the rationality button is pressed, it is pressed. It is pressed forever. Yeah, and forever. like it will be pressed for generations. That's the best thing. Yes. You can right now like immediate, like instant gratification, like you can spread hate. Right. But rational thinking is passed on by generations. Like as much as like one of the best things I've had in my life was being a Tamilian, where like I think at least for like last 100 years, ever since Periyar and people like it, popularized the idea of Dravidian movement, rational thinking. It became it's right now becoming a lot more genetical aspect of Tamilians. Right. If you can clearly observe it. Why is still people not able to get power in Tamil Nadu? No, in spite of all this, like they are trying all the speeches in Tamil Nadu also. They're saying like, oh my God, minority I will save you from minority. I will save you from this
party politics or like, nepotism and whatever. They're trying to be the saviors, but Tamil people are like, no, we are fine. Right. हमको development हो सकते हैं. Like they have problems amongst themselves, like both the parties. You know the funny part, in one of the elections in some South Indian state, BJP imported Yogi Adityanath over there to tell them that if you choose BJP, we will make, I think it was Kerala, we will make Kerala as good as UP. Actually, he was saying this, and I was like, what? I mean, what? Whom he is talking to? Some zombies or somebody who doesn't understand the language, or what? Or who hasn't seen? लोग मंगल ग्रह पे रहते हैं क्या? उनको पता नहीं है यूपी क्या है? And I'm sure people buy into this narrative in Kerala also. It's just like that's not big enough for them to be concerned about change of power or whatever. Even in Tamil Nadu, there are like very staunch right-wing people who really want BJP in power in Tamil Nadu. I can say that. But it's just that the majority of the people, I don't want to be like very pro Dravidian politics or per se, I don't know about it, but the good fact that it from the beginning of the Dravidian movement, or since Periyar started the movement, has pointed towards rational thinking and critical thinking for yourself more than any other aspect, like development, or that all came like later on. Healthcare, education, manufacturing, that all are like other aspects of it. But the core of Tamil Nadu politics, at least for the past 100 years, have been based on rational thinking for yourself. And it's not against Hinduism. There are like so many, my mother, for example, like I come from this family, my grandfather was a politician, and he was a close friend of Anna Durai, then CM of Tamil Nadu. And my father is a full atheist and is like full the Dravidian movement, and my mother is full religious. And the fact that's okay. I think like I've seen it time and again in Tamil families where this can coexist without any friction, without any problems or whatever. And I can choose my identity. I can choose what level of spirituality, religion, and rational thinking I can choose. That free will and rational thinking goes a long way, more than trying to be, go against the government. Trying to be like, of course, it just needs to be there. But I think this is the fundamental change that India needs to point out at this. Yeah, but education plays a role here. It does, and the right kind of education. Right like kind you of said. education, right. Exactly, right kind of education. And I have seen Mr. Stalin, the CM, saying certain very good things and making policy decisions about the education, primary education in Tamil Nadu, that he is taking care of the scientific temperament is also inculcated among young people, etc., which is, as a North Indian, I really envy South Indian states and their politicians for at least doing these things publicly without any fear from Delhi or anything. What my personal teaching has to be as a comedian is what Tamil Nadu has taught for like 100 years. It's the starting of rational thinking and conscious thinking for yourself. In Tamil they call it Pagutarivu, which is like the ability to dissect things and understand. Yeah. The causal relationship between things and understanding. Exactly. Yeah. And you can choose for yourself at the end, but try to be that. Even the spiritual leaders, and now I want to come to this controversial thing, that is the North Indian Babas, the godmen, they are horrible. In Tamil Nadu or Karnataka or any other part of South India, the Babas over there are talking much better sense and really talking about something spiritual. Here in North India, the Babas, the godmen, ek to per capita Baba is too much now in North India. Chote bacche, those who have to be in their kindergartens are becoming Baba, and they are telling their age groups that don't go for bhautik shiksha, the material education के से दूर रहो, और ये वाली शिक्षा जो होती है स्पिरिचुअल शिक्षा ये ले लो. तो बाबा का जो कल्चर है वो भी, अभी किसी गेस्ट ने भी कहा कि साउथ इंडिया में जो बाबा होता है वो इंग्लिश स्पीकिंग होता है, उसका कुछ अपना और भी करियर होता है, कुछ कहीं से वो आता है, और उसकी जो ऑडियंस है वो भी एजुकेटेड ऑडियंस है, तो वो मिसोजिनी और हेट्रेड उस तरह से स्प्रेड नहीं कर सकता. लेकिन जो नॉर्थ इंडिया का बाबा है वो आउट एंड आउट मिसोजिनिस्ट है. वो महिलाओं के बारे में गंदा बोलता है, वो माइनॉरिटीज़ के बारे में गंदा बोलता है, और वो उन लोगों के बारे में जो रैशनैलिटी को सपोर्ट करते हैं उनका भी मजाक उड़ाता है. सो दैट रैशनैलिटी इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट नीडेड इन सोसाइटी. वो ही इज़ ट्राइंग टू गिव दिस मैसेज. तो मुझे बाद में सोचा कि सदगुरु एंड maybe other gurus also, and then we have very good and strong tradition of
spiritual philosophers from South India. We hardly have anyone from India in 19th century, 20th century rather. कुछ भी नहीं है, पूरा 20th century खाली है. 21st century में तो ये cheap babas आ गए हैं. मुझे I don't know about the extreme of the North Indian Babas, but me personally, I'm not a fan of any kind of Babas, even like South Indian Babas. I mean, like, there is some good aspect to it. The population, the quality of population they are catering to. The guest who was mentioning these Babas and the difference between North and South Baba, he was mentioning the difference between the population they are catering to. तो वहाँ पर working class, highly professional, highly educated लड़कियाँ, महिलाएं हैं साउथ में, तो वो कर सकते हैं. नॉर्थ के बाबा बहुत बुरा बोल रहे हैं, बहुत ख़राब बोल रहे हैं महिलाओं के बारे में. Outright hate and misogyny and character assassination of women. It's like something, I don't know if you know, one of my favorite podcasts, English podcasts, is like a Diary of a CEO. And I think one of the people, they had a whole debate on this being male in the current generation, right? And like whatever I said, even buying the Thar or it all starts from the fact that men very, very psychologically and deep inside are feeling less men day by day. And then as an overcompensation, they do everything to make themselves feel like men again. Like buying a Thar or Harrier, following Andrew Tate or whatever. Beer biceps. तो वो जो जिम वाला फिनोमेना है, because you don't get to sweat it out in real life, है ना? कोई कोई फिजिकल एक्टिविटी उस तरह आप कर ही नहीं रहे हो. आप अपनी कार भी मेंटेन नहीं कर रहे हो खुद, उस कार वॉश भी कुछ और तरीके से हो. इसलिए I even had a whole agenda on this guy also, right? He's supposed to be an English Indian podcaster, and almost 80-90% of every North Indian I've seen, especially in the belt he was talking about, knows him, worships him, reveres him in especially the age group 20 to 25, 20 to 30. And for an Indian podcaster who does English podcast, almost no South Indian I've seen even knows him, knows the name. And I think like the difference is the same thing, right? North Indian ka log, you asked the question, right? What is the difference? One thing again I see time and again is that you show them confidence, you can sell anything to them. Starting from comedians to this podcasters or whatever, you show that confidence like, mujhe pata, listen to me. The moment you do that, right, you have that charisma, confidence, doesn't matter what... Alpha male. Alpha male attitude. Doesn't matter what comes out of your mouth, people buy it. Same podcaster, if anyone listens, the first time I, listened to this guy, within 5 minutes I was like, this guy is bullshit, man. Doesn't matter how confidently he says things. It doesn't feel like... Propagating a lot of superstition also. Exactly. And, like something feels off and then people can figure that out. It's not authentic. It's not coming really from you, and whatever you're projecting the guy I'm not hating on him or whatever. Yes, of course. This is the cultural difference. I know time and again North Indians fall for this confidence that anything can be said with conviction, they will believe. Like South Indians have some level of critical thinking, doesn't matter how confident you sound. And people have told me, like the biggest problem I have had as a comedian is people telling me like, you should be more confident on stage. No, you're like a good comedian, your jokes are funny and all. I agree. Being confident on stage and saying anything wrong, any lie or anything, since last 11 years, India is suffering that. I can imagine what you're saying. It is. And like there is certain states, certain section of people, there's like a concentration of people in certain states who buy heavily on this confidence and attitude because they feel underconfident deep inside. And they want a leader figure for them to follow and whatever. Whereas like if you feel really confident in your personality and character, in your righteousness and whatever, if you're not operating in that fear and whatever, then you don't need another person to be confident for you to feel confident and follow him. अभी एक बिहार से आने वाले लेजिस्लेटर ने क्या दिया कि गोरखपुर has become Spain. As good as Spain. I mean, और बनारस का क्योटो बनाना था और उसने कहा गडकरी सड़कों को बनाने वाले जो हैं जो ख़राब सड़कें बना रहे हैं, उन्होंने अभी कह दिया कि यूएई के शेख ने कहा मोदी जी से कि मुझे गडकरी को दे दो, मुझे भी इतनी अच्छी सड़कें बनानी है.
ये लोग कैसे बोल लेते हैं ये सब? कॉन्फिडेंस ही है सिर्फ इसमें, आप Confidence here, like, see, confidence is very easy to fake. If I have to fake confidence, I can. It's not like it doesn't come to me. Oh yes, you said it. You said it. So suddenly I'm like becoming like this alpha male that you are talking about, right? It's not about that. And like, if you have any level of self-awareness, you can't fake confidence. Right. You know, if you understand genuinely what you who are, you are, what Yeah. life is, or whatever, you know, whatever, then like I cannot fake. I mean, like technically I can fake confidence, but if I'm truly being myself, I will be only as confident as I am. And this overconfidence is coming from lack of self-awareness is what I feel. But since like a lot of this conversation, I think even for you, like it's just like very pro-South, you know, which is a good thing. Like, Yeah, which is a good thing. What do you think? Let's talk about the other sides, right? What do you think is there in the North that the South lacks? Or what can the South learn from? That should be definitely some attributes, some characteristics. ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब हम ये सोचते हैं कि हम अच्छी ज़िंदगी कैसे जी पाएँ भारत में रहते हुए, तो हम साउथ मूव करने की सोचते हैं. मेरा पहला पॉडकास्ट जो किंतु परंतु का पहला पॉडकास्ट था, इट वाज अबाउट अ गाय हु लेफ्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली. ही वाज लिविंग इन सेंट्रल दिल्ली. ही लेफ्ट सेंट्रल दिल्ली एंड वेंट टू साउथ इंडिया. तो मेरा पहला पॉडकास्ट ही इस पर था एंड फॉर मी इट वाज वेरी एस्पिरेशनल. और मैं भी कभी सोचती हूँ कि दिल्ली छोड़ दूँ, चली जाऊँ कहीं, तो इट इज़ ऑलवेज, हमारी बहुत फैमिली जो है वो अमेरिका, कनाडा, यूके वगैरह में रहती है, लेकिन वो कभी नहीं मुझे लगता है कि मुझे वहाँ जाना है. व्हेन एवर आई थिंक ऑफ गुड लाइफ, इट इज़ ऑलवेज साउथ. तो साउथ इंडिया इसलिए like I don't want to give a false impression for the audience, viewers or whatever. वो साउथ हेवन है, ऐसा नहीं है. वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, नहीं. वहाँ पे political AQI, वाटर क्वालिटी, फूड क्वालिटी. मेरा एक दोस्त भी ऐसा है, वो कोडेकाना के बगल में रहते थे, वो फॉरेस्ट में, and he moved mainly because he learned, he was a climate change activist or whatever. He found out that this is very proven thing apparently. It's like by 2050-55 there will be a lot of changes in the weather of North India, especially because of the Himalayas. And even in the south, there will be very few habitable pockets of land in whole of India, and Western Ghats, that area is one of them. Western Ghats, Kodaikanal, जैसे एक बहुत लोग जा रहे हैं वहाँ. जा रहे हैं. Like there is of course piece of thing. There is the climate aspect of it as well. But like it's just that like I don't want anyone to feel like oh वहाँ पे सब easy मिलता है. नहीं, वहाँ पे problems है, वहाँ पे interstate के problems है, you know, सब जैसे होते हैं. But that narrative is not heard. That's Yes. what we have to do. Yes. You know, as a first step, like that's a good thing you're talking in the podcast, is like let the narratives of every state be heard first. Yes. Let the stories come out of every person. Exactly. And let this particular whatever power centers start listening to it, start being opening to the idea of listening to other stories, and so that like there is comprehension, there is understanding. एग्जैक्टली. एंड ये जो अज्यूम्ड सुप्रीमेसी है नॉर्थ की, उसने नॉर्थ को बेहतर नहीं बनाया है, नॉर्थ इंडिया को ख़राब किया है. तो इसलिए भी हमें सोचना चाहिए कि वी आर इन एवरी पैरामीटर, इन एवरी सोशल इंडेक्स, इन एवरी सोशो इकोनॉमिक इंडेक्स, वी आर लैगिंग बिहाइंड फ्रॉम साउथ इंडिया. तो हमें समझना चाहिए. आप सोचिए केरला में एक भी बेगर नहीं है. ठीक है, केरला में और साउथ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा है, आईटी वहाँ पर है, और एनवायरनमेंट वहाँ पर बहुत अच्छा है. तो वो ये लोग जिन्होंने अपने हिस्से को बचा के रखा और बेहतर बनाया, और डेवलपमेंट इन कंपैरिजन इन द ट्रू सेंस दे हैव डेवलप्ड. तो हमें तो यू आर आवर रोल मॉडल्स. तो हम उस तरह देखते हैं. कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इसी तरह देखेगा. जहाँ पर जो सारी प्रॉब्लम्स हैं नॉर्थ इंडिया की वो नहीं है. एंड लेट्स फॉरगेट अबाउट, अभी तो हम एनसीआरबी के डेटा की बात ही नहीं कर रहे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात नहीं कर रहे हैं. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है उसमें बिहार, यूपी, ये अभी यूपी के चीफ मिनिस्टर बिहार इलेक्शन में जा कर के बोलते हैं कि यूपी के जैसा बिहार को होना चाहिए. तो यूपी के जैसा बिहार बन रहा है धीरे धीरे, वो भी क्राइम में आगे चला गया है. तो हम पता नहीं वो ये कौन से आइडियल्स हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं, झूठे आइडियल्स. That's what, right? Like the ultimate bottom line is like when people start thinking rationally, the government or the people in power will understand gimmicks नहीं चले पाएगा. Yeah. उन लोगों के लिए अच्छा actual development होना चाहिए वोट आने के लिए. Now they are so lethargic and so
they don't care about development in the states we are talking about because they know like नहीं चाहिए यार उनको एक टेम्पल चाहिए उनको एक स्टैचू चाहिए बड़ा स्टैचू गुजरात में वो बस है उनका गिमिक्स वो चल जाएंगे they will vote for us and we'll be in power forever. The Muscle moment people flexing. started thinking like they will have the fear and then only ultimately they want power. Now they're taking the easy route of like selling all this hegemony and like hate speech and gimmicks and all. The moment they realize people are not going to fall for it, they want actual development. You know, and that's what happened even in Tamil Nadu. It's not like the people in power were like, you know, saints and whatever. They wanted money. It was one of the most corrupted states and all. But at the end of it, they understand like, if I want power, if I want to vote, I have to do some development at least because people are asking me questions. Yeah, they have to deliver. Yeah. So that change has to happen. That change of people asking the questions like the same question I asked, right? People in Bihar should ask like, why are our people still going to Tamil Nadu, Karnataka, doing construction works there? Where is the job opportunity here? Right. About time. Sorry, it became a little too emotional. बिल्कुल ठीक है. हम जब तक हम डिनाइल मोड में रहेंगे, बात नहीं करेंगे, तब तक हम सुधार भी नहीं लाएंगे. तो it is important that first we accept it, then we start working upon it. So आपने तो मुझसे पूछ लिया कि साउथ इंडिया के बारे में क्या चेंज होना चाहिए. वहाँ क्या गलत है? मैं हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ यही सवाल पूछने की कि क्या चेंज होना चाहिए. Yeah, that's why I asked it. तो मैं तो हिम्मत भी नहीं कर पा रही हूँ. लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें तो साउथ में पहुँची होंगी हमारे यहाँ से. लाइक द वे वी सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स, दिवाली, होली, करवा चौथ एटसेट्रा. कुछ आपने अडॉप्ट किया यहाँ से? और यू एस्पायर टू अडॉप्ट? इज देयर एनीथिंग? होली ज़्यादा हो जाएगा साउथ में. दिवाली भी हो सकते हैं, सब इंडिया में हो सकते हैं दिवाली. बट लाइक सेलिब्रेशन जैसा कोई डिफरेंट हो सकते हैं. Diwali is a more religious festival here, but South, like at least in Tamil Nadu, we have non-veg food on that day. You know, it's all about sweet celebration, crackers. It's like not so much about a religious festival per se. And there is obviously Pongal and Harvest Festival जैसा हो सकते हैं. Festivals अभी भी like आज का लोग like Halloween के celebrate कर सकते हैं. No, I was knocked at the door by a kid. It's like trick or treat. I was like क्या होते हैं? Valentine's Day and Halloween. These two festivals are reintroduced. और बैंगलोर में ये वो क्या होता है? दुर्गा पूजा भी like बढ़िया हो सकते हैं. Like because like a large Bengali population also, and it become like a very Indian thing of late. I think a lot of that is happening. I think. Right. So आप लगते हैं like South Indian का लोग को celebrate नहीं करना अच्छा. नहीं. अच्छा खाना बताइए. Food. Do you enjoy North Indian food? Yeah. What kind of North Indian food you enjoy? Because we have like different cuisines like Punjabi cuisine and then North Indian Vaishnavi, Gujarati style cuisine, then Mughlai Muslim cuisine and etc. मुझे पंजाबी अच्छा लगता है. I love a good mutton rogan josh with a nice. That is not Punjabi. That's not Punjabi. Sorry, it's a more Delhi thing, I guess. No. Okay. That is a Mughlai. Mughlai. Okay. Yeah. So then, what is Punjabi then? I thought roti sabji. Punjabi is chola bhatura, shahi paneer, and chana. Chana, अच्छा. I like a good mutton rogan josh. मुझे पसंद है. I went to UP कानपुर one. वहाँ से वो क्या बोलते हैं? बिरयानी? No. सोया चाप चाप और मटन चाप वो मुझे अच्छा लगता है. मटन चाप भी मुझे अच्छा लगा था. और I think I like, you know, so we have exported lot of food to the I'm a non-veg West. lover basically, so I think like I love most of this. अच्छा मुगलाई बिरयानी भी अच्छा लगेगा. Right. Thank you so much. Sure. बहुत अच्छा लगा बात करके. मुझे भी. I think मेरा लाइफ में इतना हिंदी नहीं में आई डोंट थिंक आई विल एवर डू इट आल्सो इन माय लाइफ. सो इट्स लाइक एक बकेट लिस्ट का आइटम है मेरा. लाइक माय एक्सपीरियंस, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस भी है. और मुझे आई डिडंट इमेजिन लाइक इतना पॉलिटिकल भी हो जाएगा बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ एज नॉट सो पॉलिटिकल गाय. You know, even my comedy and all, like how much ever I spoke in this, I don't try to do it because at the end of it, like I said, I go for like consciousness more than direct Naveen, politics. we don't talk about party politics. We talk about the politics that affects our lives. Exactly. And politics हमारी जिंदगी में इतना घुस गया है कि हम उसको अवॉइड नहीं कर पाते हैं. कहीं ना कहीं से आ ही जाते. Even what food you want to eat is very political now. तो खाना कौन क्या खाएगा ये भी जब पॉलिटिक्स तय कर रही है तो फिर आपको अपनी डाइनिंग टेबल पे बात करनी पड़ेगी. Exactly. And just like how I said, like I'm considered a South Indian comedian, I feel like लोगों को लगता है political comedian
बीजेपी के बारे में बात सकते हैं, राइट विंग के बारे में, ये भी पॉलिटिक्स है। मुझे भी पॉलिटिकल कमेडियन ले, इसलिए मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि पॉलिटिकल कमेडियन है, हम लाइक नहीं है। बट मन में हम लाइक आई एम, इन अ वे, इन माय ओन वे, व्हाटएवर which I think is more important, politics, language, caste, religion, the basics or whatever, culture. It is all politics of India, especially country that as diverse, everything is politics. Absolutely. And in spite of not talking about politics of the country, we talked about politics of comedy. Thank you so much. Thank you, likewise.